हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनाइटेड रोड। और साथ में देख के हैरानी किसी को होगी नहीं, बिकॉज अंकित भैया हैज बीन अ रेगुलर ओवर हियर। पिछले कुछ टाइम से मैं ही रेगुलर नहीं था अपने चैनल पे, तो मैं भैया को भी लेके नहीं आ पा रहा था। अरे मैं ऑलमोस्ट बोल रहा था वेलकम टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। अच्छा क्या बोल दिया, लेकिन वही अपना घर जैसे ही है। बट अगेन यार थैंक्स फॉर कॉलिंग मी यार। मतलब तो बोलने की बात है, लेकिन द आइडिया बीइंग दैट इट्स ऑलवेज गुड डिस्कस करने के लिए, स्पेशली जब हाँ हम अपने अपने क्लब्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन न्यूट्रल ओपिनियन देना और भी मजा आता है मुझे तो बहुत, क्योंकि यार आप बिंदास बिल्कुल बोल सकते हो बिल्कुल। विदाउट एनीथिंग। और अगेन भाई सब लोग जो देख रहे हैं भाई, प्लीज लेट्स लाइक द स्ट्रीम। और शाउट आउट है अंशुमन को, वेरी क्लोज टू 4K, सो लेट्स गेट हिम टू 4K। ऑलराइट, सो जय भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। तो सबको पता है कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। दिस इज द बिगेस्ट गेम ऑफ द वीक, सिंपल एज दैट। मतलब ठीक है, लिवरपूल एंड मैन सिटी आर प्लेइंग, बट द ग्लोबल लेवल पे जो है एल क्लासिको, ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना गेट बीटन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, किस तरफ देख रहे हो, किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है मैच स्ट्रेट अवे? ये देखो एल क्लासिको ना ऐसा एक फिक्चर, यू सेड इट राइट। अब देखो दो मैचेस मैं तो बोलूंगा, आई नो वर्ल्ड फुटबॉल में काफी है, मतलब आप पूरा वर्ल्ड देखो तो मतलब आप तो रिवर प्लेट और वहां भी ना आप यू कैन टॉक अबाउट इट, लेकिन सच में बोलो तो यूरोपियन फुटबॉल में मेरे लिए दो मैचेस ऑलवेज स्टैंड आउट, वो है एल क्लासिको और एक अपना है मिलान डार्बी। ऑफ कोर्स मैं मिलान के लिए सॉफ्ट रखता हूँ फॉर पीपल वंडरिंग व्हाई, लेकिन एल क्लासिको मैं एग्जांपल देता हूँ ना, इस समर में प्री सीजन गेम बहुत है एक लास वेगस में, एल क्लासिको, ठीक है। उसको नाम दिए थे, लेकिन आई नो वो था नहीं इधर इन बर्नबे और वहां पर नहीं था, क्या बोलते हो नो अपने कैंप नो में, लेकिन फिर भी दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट हीटेड मैचेस जो मैं देखा हमेशा प्री सीजन में। तो एल क्लासिको समथिंग्स गॉट टू गिव मुझे एग्जैक्टली। याद है उस गेम में आई थिंक राहो वर्सेस रूडिगर हुआ था एक बैटल एक मोमेंट के लिए, और वो एक ब्रिलियंट बैटल था। टॉकिंग अबाउट रूडिगर, अगेन एक्स चेल्सी मैन है, तो यहाँ पर थोड़ा दो शब्द यहाँ बोलना चाहूंगा दैट लास्ट मैच में जो हुआ ना, आई थिंक उनको ऐसे जरूरत नहीं थी, डेस्परेशन नहीं थी कि दे नीडेड अ पॉइंट। हाँ रियल मैड्रिड अगर फिफ्थ मैच डे में क्वालिफाई होती फिर भी दे वुड हैव टेकन इट, लेकिन रूडिगर वाज देयर फॉर हिज टीम एंड स्कोर्ड दैट और टेकिंग दैट ऑन द नियर द आई। तो दैट काइंड ऑफ डिफाइंस कि यार कैरेक्टर्स जो बनाते हैं ना एल क्लासिको, आई थिंक दीस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स मेक एल क्लासिको ओवर द इयर्स। तो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स इन एल क्लासिको, और वो मुझे एक्सपेक्टेशन है अभी भी। आई वोंट बी सरप्राइज कि रूडिगर मास्क पहनकर खेले। एग्जैक्टली। Alright, so Manish, welcome to the stream. Red Devil Boy, welcome to the stream. So, this is started as one of the games very early in the season. Abhi season just shuru hua and it's called been like whoever wins this game is like one step towards La Liga, because these two teams doesn't seem to be dropping points against anyone else. They have dropped like 2 points, but overall it's like if they are dropping here, it will be very difficult in the coming games, because both the squads are absolutely fantastic. And Real Madrid might have to cope up on Wednesday, but we are very close to seeing Barcelona in UEL, 160 million spent. And they were laughing at us, they were laughing at Chelsea, they were laughing at United. Obviously, they ruined your window, so they were laughing at us, at you. They were laughing at us because 10 years back, they won against us in the Champions League final, so that's why. So, overall, अभी क्या लग रहा है भैया कि this game is a step towards La Liga already? हाँ मतलब मैं टोटली डिनाई नहीं कर सकता, मतलब डेफिनेटली आप बोलोगे एथलेटिक बिल्बाओ एक्चुअली अच्छी लग रही है इस सीजन में, ऑब्वियसली बेटिस, सोसिएडाड, लॉट ऑफ अदर टीम जो कर सकते हैं सरप्राइज, ऑब्वियसली विलारियल, आप बोल सकते हो वेलेंसिया, सेविया बहुत सेल की है अभी, आई डोंट सी देम डूइंग वेल। तो रियलिटी वही है वेदर वी लाइक इट और नॉट कि यार दिस इज गोइंग टू बी द मेक और ब्रेक काइंड ऑफ फिक्सचर। In fact, हाँ, only argument being that World Cup is going to be a World Cup year, right? तो World Cup के बाद में जो fixtures है ना, it depends, मुझे याद नहीं exactly क्या fixtures है दोनों teams के, तो हो सकता है वहां पर थोड़ा सा difference आए, लेकिन you're right, 6 points। अब लास्ट सीजन सबको याद होगा दैट रियल मैड्रिड इतना लीड ले ली थी कि डिस्पाइट बार्सिलोना बीटिंग देम 4-0, इट वाज बेसिकली टू लेट फॉर बार्सिलोना, ठीक है। इस बार लेकिन अर्ली ऑन इटसेल्फ वो दिख रहा है दैट एक टक्कर हो रही है नो। और अगेन हम आप स्क्वाड्स, आप आई थिंक यू वर मेंशनिंग अबाउट द स्क्वाड्स, clearly in terms of the squads, for me, yes, Barcelona also has a lot of injuries that has to be spoken about,
लेकिन फॉर मी इन टर्म्स ऑफ द स्क्वाड ना, दिस इज आर्ग्युबली टू ऑफ द बेटर स्क्वाड्स इन रीसेंट एल क्लासिको हिस्ट्री. मैं तो इतना तक बोलूंगा, Exactly. बिकॉज टॉक अबाउट स्ट्राइकर्स, मतलब मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, एनीवन इन द चैट प्लीज रिमाइंड मी. लेकिन लेवेंडोव्स्की और बेंजेमा जो है ना, एक बैटर इन इटसेल्फ, आई थिंक वो एक डेफिनेशन होगा, स्पेशली नॉट ओनली फॉर एल क्लासिको बट फॉर बैलन डोर. क्योंकि यार आपको पता नहीं है, आई थिंक लेवेंडोव्स्की को पूछा गया, डू यू थिंक बेंजेमा इज द फेवरेट दिस टाइम फॉर बैलन डोर? उसने क्या बोला, या ही इज डेफिनेटली अ फेवरेट एज लॉन्ग एज बैलन डोर कंडक्ट किया जाए, because what happened to him a couple of years ago Yeah, with the exactly. COVID season. That was a daylight robbery. We have talked about it, हाँ. Ankit. That was a daylight robbery. We will take some, comments out there, some interesting comments. Barcelona are going to play after Victoria. They can be mentally disturbed and get screwed by Bayern. Even if they're not getting screwed by Bayern, I think they have little or no chance, of getting into UCL unless or until Inter does something extraordinary. Inter goes out and loses to Pilsen or get battered by Bayern Munich, which I don't see that happening. Getting नहीं, battered लेकिन and टूट हो सकते losing. हैं यार. जो मैंने तो 10% चांस दिया है बार्सिलोना, 10% बहुत ज्यादा दिया है. बट टॉक Yeah. अबाउट इट, आप अगर देखो ना इंटर का जो चल रहा है सीजन, मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज टू फिक्सचर्स दे हैव डन बैड इन ऑलमोस्ट एवरी फिक्सचर. और लास्ट वीकेंड में फिक्सचर चलो ससोलो के साथ छक्के थे, तो एंटायर सीजन दे हैव जस्ट स्टूड अप फॉर प्रॉपर 3 मैचेस. तो वहां पर मुझे लगता है दे कैन, इफ दे गेट 2 ड्रॉज, इफ दे गेट 2 ड्रॉज व्हिच इज क्वाइट पॉसिबल, सच में बोलूं तो हु नोज बार्सिलोना. लेकिन हाँ, कैन बार्सिलोना बीट बायर्न म्यूनिख, वो बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए. वो Exactly. आई वुड डाउट. Alright, so guys, जो भी अभी मेंबरशिप के जिसके भी 3 महीने हो गए ऑलरेडी, कांग्रेचुलेशंस. और अंजुल भाई, you have renewed, so thanks a lot for joining in. Saka, what about Saka? Saka, I have no idea. Is there anything about Saka? We are going to talk about Reece James. We are going to talk about United's game. But yeah, Ankit Bhai, as a Chelsea fan, we all know how big of a blow Reece James is to Chelsea's chances of finishing in top 4. So Ankit Bhai, El Clasico we will talk about. We will talk about City, Liverpool. We will talk about United's game. But Reece James injury, how big of a blow that is for you guys? सच में तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सुबह से डिप्रेशन में हूँ. देयर इज नो टू वेज अबाउट. हाँ, देयर आर रिपोर्ट्स सेइंग दैट नहीं, पॉटर ने बोला है दैट एक वीकेंड में एक और होने वाला है टेस्ट, एंड देन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट दे विल डिसाइड वेदर इज गोइंग टू बी यस और नो इन टर्म्स ऑफ हिम गेटिंग दैट लॉन्गर ब्रेक. लेकिन रियलिटी क्लियर है. जैसे बेसिकली लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स का भी हुआ है रिसेंटली, हमें पता है. if there's a problem in the knee which almost requires a surgery, it's better to get the surgery. That's a real fact in terms of medical जो भी experts बोलते हैं. I've seen a lot of tweets already from them as well. So I feel that yes, Reece James is a huge one. हाँ, under Tuchel it would have been even bigger. ये एक चीज बोलना चाहूंगा, under Potter is not as big as maybe under Tuchel, लेकिन it's still huge. Tuchel के अंडर Reece James, he was our only attacking outlet, and that's, I know, so funny to say, but Reece James अपना right back or right wing back, he's our most attacking outlet. लेकिन reality वही है that both defensively and attack में he is our main man. तो हाँ, with Kante also out, अब added to that Mason Mount, आज सुबह ये भी न्यूज आई है that there is a scan that is undergoing with Mason Mount, or based on the result they will decide about Mason Mount whether he'll play this weekend. Khair, Mason Mount is not such a big injury, but I think it's about Reece James. Right now, I don't think we have a replacement. Simple as that. Overnight, I've changed my expectations for the season. With Potter, things were looking really exciting. Like with Reece James missing, which is quite likely abhi. With Aspie, as much as I love Aspie being a servant for EPL and servant for Chelsea Football Club, I don't see that he's a right back. Who can handle. मतलब आप देखो, this weekend we are playing Aston Villa. Even Ollie Watkins, मैं fear करूँगा. All right, so getting some comments in भैया यहाँ पे. Newcastle को कम नहीं समझना. Obviously, when it comes to United at this point of time, we cannot take anyone lightly. We are still a team in transition where we are creating chances, but we are still lacking that. Ronaldo is still not 100% yet. He scored the winner against Everton, but against Omonia as well, he was lacking his match sharpness again. So it's like up and down at this point of time. Newcastle को तो यार किसी को भी easily नहीं लेना चाहिए at this point of time, जैसा वो खेल रहे हैं. उनकी midfield देख लो, उनका ever improving defense देख लो. So किसी को भी lightly नहीं ले सकते. But coming to this, मैं mix and match कर रहा हूँ थोड़ा. Arsenal can beat Man City, Pep says. भाई तो Pep ये थोड़ी बोलेगा कि अरे हम तो बिल्कुल ही जंगल के राजा, हमें कोई हरा ही नहीं सकता. है कि नहीं भैया? वो
कोई भी अरे मैनेजर नहीं बोलेगा। मोरिनियो भी नहीं बोलता था। पेप तो मतलब ऑब्वियसली ही इज फार मोर हम्बल। या अच्छा संकेत सो थैंक्स। या ऑलराइट, सो रियल मैड्रिड 3 बार्सा 1, आई थिंक थोड़ा ओके, सा, yeah, that's a bit, I am not expecting 3-1 type of a game, to be very honest. कुछ तो समथिंग गुड गिव, लेकिन अंशुमन समथिंग गुड गिव, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोस गेम्स जहां पर हमें दिख रहा है दैट नहीं, यू नीड बेसिकली यू नो एज एन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, क्योंकि यार बार्सिलोना का जो डेस्परेशन होने वाला है, जो हमने बात की अबाउट यू नो आफ्टर दोस लीवर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, आई थिंक मतलब दे हैव टू विन द ला लीगा, मतलब नोट टू बी अबाउट इट। डेफिनेटली अगर यूरोपा लीग जाती है, विच इज क्वाइट लाइकली, हम बात ही कर चुके हैं उसके बारे में, आई थिंक यूरोपा लीग में, करेक्ट मी फ्रॉम पीपल, but I think they get close to around 10 million euros Europa League में, or of course with La Liga I don't think that will be enough as only Europa League, so they have to win La Liga as well, नहीं तो the debt is going to become even more than that। I think Barcelona के players में लेवेंडोव्स्की की बात करें ना, लेवेंडोव्स्की क्यों आया था बार्सिलोना, for him to win more titles and win more titles abroad plus बैलन d'Or, लेकिन बैलन d'Or तो चलो मिलना चाहिए अभी, लेकिन हाँ क्लियरली मुझे लगता है that बार्सिलोना विल वांट टू कम स्ट्रॉन्गर और थोड़ा बैटल होगा। हाँ ये नहीं बोल रहा कि बार्सिलोना विल बी द बेटर टीम, रियल मैड्रिड हैव बीन लाइक मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड ने धो डाला है टीम्स को, ठीक है, तो यहाँ Yeah, पर मुझे लगता है क्लोजर होगा, लाइक अंशुमन सेड आई बिलीव इट विल बी क्लोजर, लेकिन अगेन बेंजेमा इज नॉट इन 100% फॉर्म वर्सेस लेवेंडोव्स्की हु एक्चुअली यू नो आयरॉनिकली बेटर लग रहा है इन द लास्ट 2 वीक्स, तो yeah, आई मस्ट Inter के against he was the only guy playing, ऐसा लग रहा था, हाँ you know. लीडर, अब ही बादशाह लीडर अभी आज के दिन में, सच में बोलूं तो। exactly, Lewandowski also loves scoring at the Bernabeu, ये तो हमने देख लिया है वो लेवल, you know, even against with Dortmund और उसके बाद फिर बायर्न, तो ठीक है, मतलब he is a goal scorer, इसमें किसी को डाउट नहीं है regardless of the age, you know, 50 million when everyone paid 50 million for someone like Lewandowski, you know, that's what his value is, you know. हम उस पे हंस सकते हैं कि 34 साल के बंदे के लिए, you know, 2 साल के लिए 50 million दे दिया, but if Barca end up winning the league, you know, if Barca end up winning La Liga, so उनके लिए ये मजाक रहेगा फिर 50 million, you know, they will be like now we will laugh, so for 50 million obviously even I said that it was Barca, तो किसी ने criticize नहीं किया, imagine United or Chelsea paying someone 50 million for a 34-year-old, you know, तो उस टाइम पे लोग बिल्कुल लोग बौखला जाते, लोग पागल हो जाते उस टाइम पे, वो वैसा नहीं हुआ। Coming back to some comments, and Rashford at least is getting into those positions where he is getting chances जहां पे वो शॉट ले सके, Ronaldo is not getting, and obviously I will blame Ronaldo स्ट्राइकर है भाई, he is there to score goals, जब वो पोजीशन पे ही नहीं होता जहां पे उसको गोल मारना है, so who is going to blame who, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। रैशफोर्ड तो यार पोटेंट गोल स्कोरर, तो मैंने रैशफोर्ड को कभी नहीं बोला, रैशफोर्ड इज अ विंगर, रैशफोर्ड का काम है दूसरों को पास देना, और जब वो नहीं करता तो फिर मुझे गुस्सा आता है, you know, at times you can take shots, but हर बारी जो वो ट्राई करता है sometimes too much glory, वो उसको भी नहीं करना चाहिए, बट यार रोनाल्डो विल बी ब्लेम्ड, सिंपल सी बात है। आई थिंक एक मैं ये भी पॉइंट रखना चाहूंगा अबाउट सैंचो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन सैंचो इज आउट ऑफ द स्टार्टिंग 11, जो थोड़ा सा Yeah, सरप्राइजिंग लगा मुझे, यू नो, व्हिच इज लाइक आई नो दैट मार्शियल का ज्यादा इंपैक्ट लग रहा था, रोनाल्डो को यू नो मतलब कभी ना कभी तो ट्राई करना ही था, मतलब ही हैज टू गेट मोर मिनट्स, लेकिन सैंचो नॉट कमिंग, मतलब वाज ही इंजर्ड, क्योंकि सैंचो मेरे ख्याल से शुरू मच बेटर किया था इस सीजन, राइट? yeah, he started well भैया, but वही है ना कि the coach expects more, you know, the coach expects गॉट इट। more, मैनेजर को ज्यादा चाहिए, he is like, साफ साफ बोला है उसने कि we want more on the wings from Sancho, वो नहीं आ रहा, but when he came in the last game, you know, when he came in the last game, he was the game changer, so वही है, now we have options। अगर क्या था पहले, अगर सांचो अच्छा नहीं खेल रहा था तो वो खेलता ही जाता, क्यों, क्योंकि भाई बेंच से कोई नहीं है, नाउ एंटनी इज हॉगिंग द, यू नो, राइट हैंड साइड, अगर एंटनी फॉर्म में नहीं है तो वहां पे सांचो डाल सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर रैशफोर्ड नहीं खेल रहा तो यू कैन ट्राई समवन लाइक गर्नाचो, और इफ मार्शियल इज फिट यू कैन ट्राई समवन लाइक मार्शियल ऑन द लेफ्ट, बट ये पहले ऑप्शन नहीं था, पहले था कि अगर तुम सांचो, अगर भाई तुम्हारा 50% पे फिट है उसी को खिलाना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट देन यू हैव अलांगा, ठीक है, तो उसका नाम सुन के लोग गालियां देने लग जाते हैं, so, वही वाली बात है कि अगर तुमको खिलाना है तो यू विल हैव टू बैलेंस द स्क्वाड, लोगों को ये चीज समझनी चाहिए, रोनाल्डो इज नॉट गोइंग टू प्ले ऑल द गेम्स, तुम चाहे कितना भी सर मार लो, 37 इयर्स की एज में हर हफ्ते स्पर्स है, देन यू हैव चेल्सी, ठीक है, 2 दिन में रोनाल्डो खेल ही नहीं सकता 90 मिनट के 2 गेम, प्रॉब्लम विद अस इज कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मार्शियल इंजर्ड होता रहता है, ठीक है,
और उसके बाद अब अगर रैशफोर्ड नंबर 9 प्रॉपर नंबर 9 अभी खेल नहीं सकता बिकॉज देन ही गेट्स बुलीड, जहां पे डिफेंडर्स पावरफुल है, जहां पे इसको पेस से बीट करना है वो कर देगा, बट वही है कि जहां पे उसको फिर आप बैक थ्री दे दो, चेल्सी भी बैक थ्री खेलेगी, स्पर्स भी बैक थ्री खेलेगी, वहां पे इसके पीछे एक बंदा रह जाएगा, इसके बाद इसके लिए दिक्कत हो जाएगी। सो दैट्स वेयर रोनाल्डो एंड मार्शियल विल बी हैंडी। तो उस पे बात करेंगे भैया थोड़ी देर बाद में, बट दिस इज बारसा टू और बारसा स्ट्रगलिंग। यार वही है ना, एल क्लासिको में इज जस्ट द डे दैट मैटर्स, है कि नहीं अंकित भैया? आई थिंक वो ये स्ट्रगल कर रहे तो इट्स ऑल द मोर रीजन फॉर देम टू ट्राई दैट एक्स्ट्रा हार्ड, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना समथिंग गॉट गिव। या तो बारसा का लगेगा इस बार थोड़ा सा लक भी मैं बोलना चाहूंगा, मतलब आई नो दैट हम काफी मजाक मजाक में ट्रोल करते हैं ऑल दोस थिंग्स, लेकिन रियलिटी ये है, देखिए बारसा का इंजरीज के साथ इतना बुरा लग रहा है। इवन व्हेन कम्स टू रेफरिंग, यार आपको याद है इंटर मिलान के साथ फर्स्ट गेम में क्लियर हैंडबॉल नहीं दिया, इनफैक्ट अदर वे अराउंड गया, 2 डिसीजंस हुए। तो थोड़ा सा you might say वो rule of probability क्या है, finally उनको थोड़ा लक मिलेगा, and maybe this still is the game and this is a very important game for them considering the season. So I'm still guessing that it will be a game filled with drama, filled with mistakes, लेकिन साथ साथ में I believe that Barcelona, I just feel that they want a little bit more वाला सीन होगा। Exactly, मतलब they have spent so much money, they just want to prove कि भाई हम भी हैं यहाँ पे, it's not just Real Madrid, home है तो ठीक है, we are going for that. Difficulties against Newcastle. As a neutral point of view at this point of time, Ankit Bhaiya, what do you think is going to be the biggest task for United against someone like Newcastle? Oh, you know what, Newcastle, यहाँ एक just going back to history थोड़ा सा, सच में बोलो तो न्यूकासल इज वन ऑफ दोज मतलब प्रॉपर टीम जहां पर यूनाइटेड खेलना चाहिए वीक इन वीक आउट इफ यू सी हिस्ट्री। अब जैसे बेसिकली हम बुलाते थे चेल्सी में 3 पॉइंट लेन, आपको सबको याद होगा टॉटनम को व्हाइट हार्ट लेन के टाइम्स में फर्गी के समय, और अगेन इवन पोस्ट फर्गी आई वुड से यूनाइटेड हैज हैड एन एक्सीलेंट रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यूकासल, बट आज की न्यूकासल इज टोटली डिफरेंट। तो यू कैन नॉट रियली टेक इट, और प्लस आप बोल रहे थे अबाउट लक, राइट? तो न्यूकासल अगेन वन ऑफ द टीम्स, आई थिंक वो अच्छा खेल रही काफी। हाँ, आई थिंक रिसेंट 2 हफ्तों के को छोड़कर आई थिंक उनका भी थोड़ा लक काम नहीं कर रहा था। मे बी नाउ इज द टाइम दैट मे बी न्यूकासल सरप्राइज, बिकॉज उनके पास पीपल हु आर देयर इवन फ्रॉम मिडफील्ड और फ्रॉम विंग जो आज के दिन में स्कोर कर सकते हैं कंपेयर टू जो प्रीवियस टीम्स थे। एल्मिरॉन इज अ क्रिएटिव एलिमेंट, और वहां पर आई नो मलाशिया बहुत इंप्रेसिव रहे जनरली स्पीकिंग, लेकिन आई थिंक एल्मिरॉन बहुत ही ज्यादा ट्रिकरी है, तो ही कैन बी एन एक्स फैक्टर फॉर न्यूकासल। और मिडफील्ड में बैटल तो हमेशा मैनचेस्टर यूनाइटेड का ही है। आई नो कैसेमिरो फाइनली सेटल हो गए, मैक्टोमिने इस गेम में जहां तक मुझे मालूम है ही इज नॉट अवेलेबल, राइट? सस्पेंडेड है, करेक्ट। तो आई वुड से दैट एक बैटल होगा ब्रूनो गुमारेश के साथ। तो अगेन इफ ब्रूनो गुमारेश को, वही अंजुल का बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अगर मिडफील्डर्स आप बीट कर सको ना न्यूकासल का, आई थिंक द गेम इज देयर फॉर द टेकिंग। यस, यू हैव फैबियन शार एंड द रेस्ट इन डिफेंस, लेकिन इन माय ओपिनियन पेस इतना है ना यूनाइटेड का, हो जाएगा, मतलब स्पेशली व्हेन कम्स टू। मैं पिछले स्ट्रीम पे भी मैं यही बोल रहा था कि दैट वी हैव टू नॉट गिव स्पेस टू समवन लाइक गुमारेश। अगर तुमने उसको डोमिनेट करने दिया, देन ही ब्रिंग्स एवरीवन इनटू प्ले। ठीक है, सेम जैसे एरिक्सन वाली बात है अभी हमारे साथ। इफ यू लेट एरिक्सन, तो हमारे पास एटलीस्ट ब्रूनो है, दैट हु कैन सेंड इन दोस ग्लोरी बॉल्स, बट उनके पास बस गुमारेश ही है। उसके बाद जो उनके मिडफील्डर्स है, दे आर लाइक बिट पार्ट। जोलिंगटन, इफ ही प्लेज, ही कैन डू सम जॉब। उसके साथ अगर लॉन्ग स्टाफ खेलता है, ही कैन बी अ लॉन्ग शॉट मर्चेंट एट टाइम्स, बट दैट्स इट। फिर दे स्ट्रगल, विल समवन लाइक विल्सन स्ट्रगल, सैंट मैक्सिमा का भी अभी 100% नहीं पता he is going to play or not, because he is a menace for any team. He single-handedly run riot against Man City. So ये 2-3 player है उनके पास, obviously where you have to keep an eye on. But overall, I think if we can terminate the likes of Guimaraes, or for now that Varane will be back, so Varane against Wilson will be a great duel as well. So I think we can do this, but then at home we have to start stronger. ये हमने देखा है पिछले 1.5 साल में, यूनाइटेड सो रही होती है, लिटरली सो रही होती है पहले के 15 मिनट में, एंड देन दे कंसीड, एंड उसके बाद वो उठती है। तो तब तक तो शायद कासल यू विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर।
या वरान का मुझे आई थिंक इम्पैक्ट क्लियरली दिखा था इवन द लास्ट गेम जो एवर्टन के साथ आई थिंक लास्ट फ्यू मिनट्स में जो था ना Yeah. बॉम्बार्ड कर रहे थे बॉक्स को और वरान ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शन किया था आई रिमेंबर ऑफ अ कॉर्नर था जहां तक मुझे याद है एक एक क्रॉस था बट उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किया था प्लस लीडरशिप एलिमेंट भी लाते तो आई थिंक यू कैन से दैट वरान विल बी अ डिफरेंस मेकर इस गेम के लिए लेकिन मोर देन दैट वही है जैसे आई थिंक मिडफील्ड इज द की और मैं देखता हूँ यार अगेन मतलब कमिंग बैक टू द मिडफील्डर जो आपके पास है भाई एरिक्सन हो सकता है वो आपका हुक्म का इक्का निकले ही इज योर मेन गाय अगर इफ यू आर एबल टू गेट कैसेमिरो वर्किंग द वे कैसेमिरो वर्क्स और अगेन वो पासर काफी अंडररेटेड है तो हु नोज एरिक्सन माइट जस्ट जॉइन इन द अटैक एज वेल तो नॉट जस्ट ब्रूनो सो काफी पॉसिबिलिटीज है कि अगेन इट विल बी अ मैनचेस्टर यूनाइटेड ड्रबिंग फॉर न्यूकासल डिस्पाइट न्यूकासल का अच्छा फॉर्म चलो देखते हैं वैंडरवीक इज नॉट बैक फ्रॉम इंजरी करण भाई अभी नहीं है थॉट्स ऑन ग्रीनवुड बैक डोंट वांट हिम टू प्ले फॉर द क्लब अगेन आई हैव सेड दैट बिफोर आई विल से इट अगेन if at the age of this as a club you go down then you talk about all morality you talk about everything you talk about I am not saying that this was always going to be the case when it's a high profile case you always pay the victim you get out you know people say oh Ronaldo there was no evidence against Ronaldo even on social media it was just an allegation when people talk about Ronaldo there was an allegation against him there was photos videos all over social media so I don't want him back even if he gets the clean sheet from the court I think we have seen enough evidence at this point of time so even if he gets free I don't want him to play for United that's just my personal opinion if someone wants him to play for United that's their opinion so Ankit Bhaiya, what do you think about this entire Greenwood saga and we are getting a news at this point of time that he has been arrested again guys Greenwood has been arrested again because he tried to contact he has been arrested again because he went against his bail plea Oh so my he God. tried to contact his ex-girlfriend and now he has been arrested again so this is the news that is coming from the Sun at this point of time I am I not can't going to believe say it. that it's 100% true but this is the news that's coming in that he has been arrested again has been arrested See, again yeah. Celia is asking about gigs. I remember that those years also, like as an opposition fan, there was a lot of question marks on gigs also put. Like, I think जैसे अंशुमन ने बोला, it's about it's clear in it's like utter clear. मतलब इससे clear हो ही नहीं सकता था का exactly Greenwood. I think more than us deciding, more than the court deciding, simple fact मैं बोलूँ. It's about the players. At the end of the day, it's a team sport. Unfortunately, whether Greenwood likes it or not, whether जो भी है सच्चाई, the fact is if the team is not or the team is feeling uncomfortable with you around and that is for them to decide simple or मुझे pretty sure if I was a teammate I would be very hesitant to play with such a guy until I'm kind of 100% sure but can you be 100% sure कि वो नहीं है guilty because it's clear that it is guilty of the photos and whatever हमने देखा है तो I think यहाँ पर as in you the best thing even for himself Greenwood himself is just to move out of Manchester United and that's the reality लेकिन कौन लेगा उसको he has to start again simple as that from as in lower leagues that's yeah, a fact I think in especially in England I don't think anyone will take a willing anyone will be willing to take a risk और yeah जब लोग बोलते हैं ना he should be back and all ठीक है भाई वो तुम्हारा opinion है but then you have a women's team as well hmm. women's team look at the men's team and they're like these are the guys who have basically had cases against them they are playing yeah that's a you know very good point yeah that sort of an impact and they will be feeling like what are we doing out here so we are basically representing a club which has given someone like Greenwood another chance chance and all people go oh he's just a kid he made a mistake oh come on this is not that's not this what a is kid does please yeah मतलब नहीं exactly I'm with you on ये that ये पांच फॉर्म चुरा के बाजार से कुछ टॉफी खरीद के थोड़ी ले आया and it's repeated वो दिख रहा है and yeah that screenshot those videos goes for months so ये चीज बोलना second chance है चलो so we will get to the Greenwood news again I am not 100% sure at this point of time whether he has been arrested or not it's Sun but I am looking forward to some other sources as well if we can get something out of it he's asking Javi has been hyped too much Alsa to Barca is 10 times difficulty Ankit bhai I think we already knew it but what do you think Javi overhyped
नहीं, ऑर्गेनिक with much due respect, again मैं तो neutral हूँ, but clearly for me I don't think it's about over hyping him as such, because yes, you can argue कि yes, all of a sudden we were talking about, मैं खुद मतलब on my streams I was talking about Barca, can they reach the semis of the Champions League, are they there yet? But the reality is, if you see the record of Barcelona as a club na, last I think 6 or 7 Champions League games, they have only won one game, and that is telling. Yeah, you can argue that Javi is not having that एक होता है ना, compared to the best of the best European teams in terms of tactics. But again, going back to that game against Inter Milan, I think first half my tactics weren't too bad. It's about not having the right person for that particular game, and that is what happens a lot of times. See, Champions League, we all criticize every year that, come on, as in Man City, for example. I know I am talking in United Road. वहाँ पर you would obviously want to troll Man City. Lekin the reality is, Man City, PSG, etc. We can troll easily, yes, but at the same time, Champions League is a tournament जहाँ पर every player who plays for a club, for them it's bigger than the World Cup or as big, right? So they will give the 100%. So beat any team, even if Victoria plays, इसलिए मैं फिर भी chance दे रहा हूँ for them, because you have to say it's a matter of what, 4 games जो जावी ने हारा है, तो I think we have to give थोड़ा सा space. But हाँ, why I'm saying all this is because आपको याद है what was there under Coben. Now compare, as a, if someone is a Barcelona fan in the chat, or अगर कोई सुने ये, please let me know if I'm wrong. Under Coman, they were down there, मतलब absolutely shit they were, absolutely मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है. Then yes, January transfer window helped them, लेकिन जावी का एक साइकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी ऑफ द हाउ फुटबॉल वो देखता है, वो क्लियर दिख रहा है कंपेयर टू अंडर कोमन. सो आई वुड स्टिल से दैट इट्स अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर बार्सिलोना. बट आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो जावी हु हैज जस्ट बेसिकली मैनेज अल साद इन कमिंग टू बार्सिलोना एंड विन द चैंपियंस लीग, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल आल्सो. तो आई वुड मतलब वही थोड़ा ओल्ड स्कूल रखता हूँ कि यार सब क्लब्स को पॉसिबल नहीं है टू विन द चैंपियंस लीग. यहाँ पर व्हाई इज फेसिंग द प्रेशर, आई टेल यू, इज बिकॉज ऑफ दोस लीवर्स, because of itna buying so much in the summer. But again, I think being a Chelsea fan, मैं relate कर सकता हूँ भाई. You all remember Frank Lampard when he bought so many players, and Frank Lampard Javi comparison is very right, because both were ex legends of the club, both coming back. I know situation different thing, but arguably you can say it was very similar. And Lampard in the first few months did well, and then what happened? All of a sudden, as in we start losing games, and then hota hai, because when the situation is good, it's easy to continue, but like when the situation is bad is when you learn. So Javi is still learning on the job, I would say. So I would give him space. सच में बोलूं तो. Exactly. So, Agati bhai, I hope you got your answer. I also feel that way, that he's still, if he ends up winning the La Liga by the end of the season, everyone will be like, what a manager, And even if he misses out by even a single point, people will definitely talk about, he made the progress. But then again, you spent so much money. You got so many signings. You basically overhauled your entire team, and you still ended up short against Real Madrid. So, that will also be taken into consideration. But yes, long way for Javi to go. And I think at this point of time, the media, the way they hype him, as the next Pep or something like that, homegrown, or, it's going to take a long, long time. It's going to take a long, long time before we can actually get into that discussion. Sanket Bhai has shared one message. Joao Felix wants to leave Real Madrid, Atletico Madrid, looking for a new club. It's Marca. Why did he move at first place, Sanket Bhai? Can anyone just make me understand at that He point gets of the time? paychecks, boss. I know we all इतना sympathy डालते हैं भाई जाओ फिलिक्स पे, लेकिन अगर आप सोचो ना ध्यान से, I know that because वो खेल नहीं रहा एटलेटिको मैड्रिड से, that is why he's not playing much for Portugal as a starter. But somewhere Exactly. down the line, even I know Fernando Santos himself has been doing shithousery कर रहा है पूरा, लेकिन still he's not starting a lot of games for Portugal. For me, is telling. So I think there is a player in him, absolutely fantastic player on his day. But I would relate to very similar to how Kai Havertz is. Even in fact, the player that they're not very dissimilar. लेकिन वहां पर are they there, मतलब position is a quite issue. आज के दिन में, do you have a position where you have a cam or a second striker as much? You either have a traditional winger with a lot of pace, or you have a center forward, or you have someone who's basically a deep line playmaker, or that is a problem with Joao Felix, Kai Havertz kind of people, because that is a football. So even if he moves, so yeah, first of all, he has to move. No two ways about it, because even he's not getting chances. अगर chances मिलते तो फिर we can kind of argue about it. लेकिन if he moves,
which will be the right club for him? To be honest, मेरे लिए खुद doubt है कि there are very few clubs who play with two strikers up front where he could be the second striker or a cam kind of position. बहुत कम है. Price, भैया, the price tag. हाँ, प्राइस टैग इज अनदर थिंग, और मिल रहे हैं उसको पैसे, तो वो क्यों मना करेगा, मतलब टू स्टे फॉर द टाइम, Yeah, ही मैं वांट्स मैं टू वही लिव, बोलता हूँ दैट्स ना कि अगर price tag, when we look at price tag, अगर कोई जाता भी है उसको लेने के लिए, Atleti will at least demand for 100-150 million which they paid करेक्ट करेक्ट. because he's और still और very young. हाँ, वेरी यंग, एंड प्लस आप देखो, बिकॉज ऑफ हाउ ही प्लेज, ही विल नॉट स्टार्ट एवरी गेम एंड ही विल नॉट प्ले 90 मिनट्स ऑफ एवरी गेम मेरे ख्याल से. आई नो ही शुड प्ले इन टर्म्स ऑफ स्किल, लेकिन दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, विद दैट प्राइस टैग आपके पास एक ऐसा प्लेयर है हु कैन बी बेसिकली योर प्लान बी, ही इज नॉट योर प्लान ए. तो देयर आर वेरी फ्यू क्लब्स हु विल इवन गो फॉर दैट. लेकिन हाँ, if I was a club owner, I would definitely go, because talent over anything for me. और उसका mindset में issue है, वो Simeone will be the better thing to say, because for me, even when he's come on, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा that फाड़ दिया, मतलब he has to even do better वहाँ भी, I would say. लेकिन Simeone has to be blamed 100%. Exactly. So I think there's similarity between FCB and MU now, both new to the club and both have been able to showcase their style of play slowly. Last match shows, but then I think, the amount of money that Barca spent, even we have spent money, but Barca already had a squad. They were not like absolutely dead to the dustbin wala scene nahi tha, jaisa hamare saath tha. Many players wanted to leave, many players didn't wanted to, आधे लीक करने में लगे हैं, आधे को खेलना नहीं है, आधा इंस्टाग्राम पे कमेंट करने में लगे हैं. So I think, as I said, overall end of the season we can decide, whether Xavi has actually made progress with Barcelona or not. Because when we look at Premier League, यहाँ पे anytime you have to play against, 7 teams, 8 teams. मतलब कोई भी आके तुम्हें बजा के जा सकता है यार. Even this season we have seen, Newcastle taking away points against Man City thrashing United, United getting wins over Arsenal and Liverpool, So वहां पे you have basically to go after, like, भैया 3 टीमें, others they try but they are not reaching that level. मतलब रियल हो गया, रियल है, एथलेटिक एट अ टाइम वो भी थोड़ा सा डिक्लाइन कर रही है. मैं तो एटलेटिको मैड्रिड को काउंट ही नहीं कर रहा है. एटलेटिको मैड्रिड एंड सेविया आर probably going a little bit down than what they should be. Absolutely. Exactly. Celia, thanks a lot for the super chat, loving the interaction, comment and views. And Sanjay bhai, I am not biased. I'm just saying that Ronaldo needs to get in that position at least. I am not going to say कि भाई अगर वहां पे अगर रैशफोर्ड है भाई मिस कर रहा है, वो तो करता है यार, वो तो गालियां खाता है 100 बारी. जो रोनाल्डो को जो सबने बाप बना रखा है कि भाई रोनाल्डो नीड्स टू प्ले एवरी गेम. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि he needs to be there. Against Everton he was good. Against Omonia again he was pathetic. I am not saying कि भाई अगर रैशफोर्ड है वहां पे, रैशफोर्ड को तो यार गालियां ही पड़ती है उसके लिए कि he cannot finish. Many people want him to go to a different club. बहुत लोग चाहते हैं कि बिक जाए वो. So I am not going to say कि भाई अगर उस पोजीशन में है तो चांसेस मिस करो. I am just saying at least he is getting in that position. रोनाल्डो के साथ तो वही नहीं लग रहा. नहीं, और अगेन संजय, मतलब डेफिनेटली वी रेस्पेक्ट व्हाट यू सेइंग. अगेन मैं तो न्यूट्रल यार, मैं मतलब आई एम नॉट एंटी रोनाल्डो एज वेल एज एंटी रैशफोर्ड क्लियरली. लेकिन ये इतना बोलूंगा, यस रोनाल्डो इज अ गोट, ही इज वन जो आप रिलाई करोगे इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स. रैशफोर्ड playing as someone who can play as a winger, come a striker, you actually are more involved in the game. Can Ronaldo give you that what Rashford can give in terms of overall output? Along with the goals जो नहीं आ रहे थे Rashford के, तो अभी finally आ रहे, तो being at the age that Rashford is, it'll be unfair for Eric Ten Hag to actually drop Rashford right now. सच में बोलूं, at least Ronaldo को there is a lot of reason, क्योंकि it's a World Cup year again. Yes, he would want to play week in week out, knowing Ronaldo what he is. लेकिन एक्चुअली आप देखें तो फ्रॉम पोर्चुगल पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट टू बैड दैट ही प्लेज 1 game a week rather than 2 games a week. तो एक्चुअली आई एग्री विद जो एरिक टेन हाग कर रहे हैं. एज मच एज मैं चाहता था रोनाल्डो इन चेल्सी भी, मैं तो बोलना चाहूंगा. वो तो बॉयली मतलब उस टाइम पे ऑब्वियसली बात है भैया. आई थिंक दैट्स द रीजन ही वाज सैक्ड व्हेन इट कम्स टू Tuchel. हमने न्यूज़ में भी देखा. वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. प्रीमियर लीग इज वन लीग एंड अदर लीग आर इन द सेम काइंड ऑफ लीग. To an extent we can definitely say that. मतलब Serie A definitely थोड़ा improve हो रही है with the likes of Napoli, Atalanta, even Roma, Lazio is there. But apart from that, other leagues, it's like, one horse race वाला scene हो रखा है अभी. भाई मैं वही बोल रहा हूँ संजय भाई. Rashford, Martial, every touch they misses, they go out and get abused. वो हर गेम में blame होते हैं.
है ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ब्लेम तो यार मिलेगा ही उनको. आई एम नॉट गोइंग टू से कि भाई रैशफोर्ड को 5 चांसेस मिले, ओ ही जस्ट हिट द टारगेट, तो वो अच्छी बात है. आई एम नॉट गोना से इट, बट आई एम जस्ट गोना से दैट रोनाल्डो इज नॉट अप फॉर इट येट. ठीक है, उसने एवर्टन के अगेंस्ट गोल मारा एंड वी ऑल नो व्हाई ही प्लेड अगेंस्ट एवर्टन, बिकॉज मार्शियल गॉट इंजर्ड. इफ मार्शियल फील्स 100% अगेंस्ट न्यूकासल, रोनाल्डो फिर से बेंच पे जाएगा. यू नो, अगर लोगों को ये चीज एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है तो वो मेरी दिक्कत नहीं है फिर. I think Celia puts it brilliantly, that Ronaldo is an out and out striker, Rashi is not, that is the difference. इसीलिए you have more output from Rashi, एक opportunity for an output. Because Ronaldo limelight में रहेगा. और yes, again, I think संकेत को मैं quickly address कर सकता हूँ भाई. I don't think Anshuman meant Ronaldo is pathetic. The performance in that particular match was pathetic, which is quite possible. Come on, I don't think that उसमें कुछ you can deny it. Exactly, भाई watch twist करने से नहीं होना कुछ संकेत भाई. अगर गेम में वो पैथेटिक रहेगा तो बोलूंगा, और मैंने साफ-साफ बोला हुआ है भाई, रोनाल्डो इज माय अल्टीमेट गोट. ठीक है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. तो मुझे किसी से ये फॉर रीजन यार, यू कांट आर्ग्यू दैट दे आर गुड. लेकिन यहाँ पर आर दे, मतलब इतना बेसिकली दे आर इन द स्पेस कि यार हम वी कैन नॉट इवन क्रिटिसाइज द परफॉर्मेंसेस. ये थोड़ा सा आई थिंक इट इज बिट अनफेयर, बस और कुछ नहीं. बस नहीं, मतलब ब्रूनो अगर घटिया खेल रहा है, इफ मैग्वायर इज प्लेइंग बैडली, तो उसका घर जला दो भाई. यू नो, उसको सड़क पे तोड़ा के मारो, उस वाले जोन में घुस जाओ. बट रोनाल्डो को कैसे पैथेटिक बोल दिया भाई? रोनाल्डो को पैथेटिक नहीं बोल सकता कोई, भले ही वो हक दे पूरे पिच पे. यू नो, एंड दिख रहा है वो. इवन व्हेन यू लुक एट विद पोर्चुगल, यू नो, सांटोस इज नॉट you can say man enough to drop Ronaldo at this point of time. पोर्चुगल की हालत देख लो. और आई नो मैं कंपैरिजन सही नहीं होगा बिकॉज रोनाल्डो इज अ गोट, लेट मी फर्स्ट टेल यू. लेकिन साथ साथ में लाइक अगेन बीइंग अ चेल्सी फैन में रिलेट करना चाहूंगा थोड़ा. देखिए एस्पिलिक्वेटा, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक नो वन हैज वन एज मच एज व्हाट एस्पिलिक्वेटा हैज वन. ठीक है, इतना जीता है भाई वो आफ्टर कमिंग टू चेल्सी. और ही इज द लेजेंड नॉट ओनली ऑफ चेल्सी, इन माय ओपिनियन ही इज अंडररेटेड गाय इन द प्रीमियर लीग. ही इज वन ऑफ द प्रीमियर लीग लेजेंड्स, लिविंग लेजेंड जो है खेल रहे हैं. बट आज के दिन में इफ यू सी द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम, मैंने खुद बोला है दैट I wouldn't even be comfortable at all playing Azpilicueta right now. I know it's a right back versus a proper striker plus a goat है Ronaldo, लेकिन यहाँ पर वही है. At some point you have to move on, और that is the reality. वो एक लाइफ का रियलिटी है. Yes, सेम चीज हम बोल रहे थे मेसी के बारे में लास्ट सीजन. Messi has come back, I understand, लेकिन Messi is 2 years younger. People forget that. Messi started his career, if correct me if I'm wrong, वो भी स्टार्ट भी किया था शायद एक डेढ़ साल बाद में रोनाल्डो के, जहां तक मुझे याद है. तो you cannot really compare those two. लेकिन हाँ, at the same time Ronaldo himself, I think he, अगर उससे पूछे ना कि अगर आपको पोर्चुगल के लिए खेलना है हर एक गेम, वो बोलेगा भाई मतलब डेफिनेटली. और वो पॉसिबल नहीं होगा, वो वीक में दो गेम्स खेलेगा. दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन. एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर एक गेम में अगर वो न्यूकासल के अगेंस्ट है कि इफ यू पुट अप अ 10 on 10, मैं मातम थोड़ी मनाऊंगा भाई. यू नो, मैं मातम थोड़ी मनाऊंगा कि भाई आके कि भाई क्यों मार दिया 2 गोल. यू नो, आई हैव लिटरली सीन यूनाइटेड फैंस कि भाई जब ब्रूनो इज हैविंग अ गुड गेम, यार अब इसको बेंच नहीं कर पाएंगे. और ये हर फैन बेस में है, ये ऐसे हर फैन बेस में है वेयर दे हैव देयर फेवरेट्स एंड दे जस्ट कीप ऑन यू नो वांटिंग हिम टू प्ले. जैसे हमारा आधा फैन बेस साफ हुआ व्हेन यू नो पॉग्बा, व्हेन जब पॉग्बा हुआ गायब, तो आधा फैन बेस हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो गया. यू नो, बिकॉज ये पॉग्बा स्टैंस जो थे, दे वर अनदर लेवल. तो वही होता है कि भाई जो गेम में अच्छा नहीं खेलेगा उसमें उसको मिलेगी, सिंपल सी बात है भाई. अंकित भाई, रोनाल्डो को डिलीवरी, भाई क्या चाहिए डिलीवरी? ओमोनिया के अगेंस्ट कौन सी डिलीवरी उसको नहीं मिली, ये बता दो. एंड जब डिलीवरी मिल रही थी, वेयर ही वाज, मुझे बस ये बता दो. नहीं मतलब संकेत, मतलब अगेन मैं अंडरस्टैंड करता हूँ भाई, आपको डिलीवरी वो उतनी नहीं मिल रही जितना मिला करती थी इन बेसिकली बेटर टीम्स दैट रोनाल्डो प्लेड इन. अगेन मैंने ऐसे बेटर टीम्स, इट कैन बी प्रायर मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम्स. आप अगर कंपेयर कर रहे हो द काइंड ऑफ डिलीवरी यूज्ड टू गेट तब वर्सेस बेसिकली रियल मैड्रिड में, और इवन टू सम एक्सटेंट यूवेंटस वर्सेस अब, अभी कौन है डिलीवरी देने वाला? ब्रूनो आपका अटैक में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, देन यू हैव एरिक्सन, लेकिन यू स्टिल हैव कैसेमीरो. मैं तो बोलूंगा आप अगर देखे थे तो प्रीवियस गेम जहां पर रोनाल्डो ने अच्छा किया था अगेंस्ट एवर्टन, जहां पर मुझे याद है कैसेमीरो और रोनाल्डो का एक्चुअली अच्छा लिंकअप हो रहा था. अब एट द एंड ऑफ द डे इट आल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ रोनाल्डो टेक्स दोस चांसेस, राइट? तो एग्जैक्टली, कैसेमीरो आप कंपेयर कर लो, कैसेमीरो हैज लुक्ड फाइनली एक पार्ट ऑफ द टीम मोर कंपेयर टू रोनाल्डो हु हैज बीन देयर फॉर सो लॉन्ग, हु इज प्लेइंग नाउ. सच में बोल रहा हूं मैं.
I know different positions है, लेकिन वो दिखा Exactly. रहा है that somewhere down the line it is the age catching up, whether you like it or not. Exactly. And भैया एक ये भी चीज है ना, people are like, सर्विस नहीं मिली अमोनिया के अगेंस्ट, he got at least 7 to 8 chances. मैं पीछे वाली गेम की बात नहीं कर रहा, उसके पहले वाले की बात कर रहा हूँ. Where he should have at least scored 7 to 8, अरे at least scored a पोर्चुगल hat. भाई, पोर्चुगल वाला देखा था, पोर्चुगल स्पेन वाले मैच में आई थिंक इट वाज वेरी क्लियर दैट अगर उस मैच में पीपल आर सेइंग गोंजालो रामोस शुड हैव स्टार्टेड, पीपल आर सेइंग राफेलिया शुड हैव स्टार्टेड बीच में, तो आई एक्चुअली अग्रीड विद दैट. हाँ, अगेन गोइंग बैक टू द थिंग दैट भाई मैं खुद चाहता था रोनाल्डो आए चेल्सी, तो आई आल्सो लाइक द प्लेयर. मैं फीफा अगर खेलता हूँ, आप लोग देखते हो मेरा दूसरा चैनल, मैं रोनाल्डो को हमेशा साइन करता हूँ, ठीक है. तो the guy is a goat, he scores the goals. So लेकिन problem वो है that does he fit this particular style which ETH is playing? Answer is a hard no यार, सच में बोलूँ, no to Exactly. visible. मतलब यार ETH को, and he still wanted Ronaldo because he cannot trust someone like Martial for the entire season, and that's why he wanted Ronaldo to stay. That's clear. That's simple. And yes, yeah, definitely that goes without saying. We have a category of fans, and then we have stans जिनके लिए क्लब मैटर नहीं करता. वो चेल्सी में भी हैं, वो यूनाइटेड में भी हैं, वो जितने भी बड़े क्लब्स हैं वो वहां पे हर जगह हैं. They have a certain player, they just want to perform, टीम जाए बाहर में. मैं एक एग्जांपल एक और दे सकता हूँ फॉर पीपल. यस, अगेन मैं एग्री करता हूँ अंशुमन के साथ. देखिए मतलब आई डोंट नो, देयर मस्ट बी सम क्रिकेट लवर्स आउट देयर इन द चैट, होपफुली. आई नो दैट समटाइम्स ये होता है भाई, कैसे हो सकते क्रिकेट लवर्स, लेकिन प्रीटी श्योर विराट कोहली आइडलाइजेस रोनाल्डो, ठीक है, और रोनाल्डो एक्चुअली रिस्पेक्ट्स विराट कोहली. मैं पर्सनली स्पीकिंग आई एम एन आरसीबी फैन, ठीक है. यस, पीपल माइट ट्रोल मी, गो अहेड, लेकिन द फैक्ट इज I am a fan, but I'm not a stan. और मैं as an RCB fan, I can say that people are like विराट कोहली भगवान है, उसके आगे कुछ नहीं, doesn't matter what happens. That doesn't put you in the right sporting spirit. Because at the end of the day, you have a manager, you have a coach, you have a philosophy. आपके पास एक टीम है. It is a team sport. You're not playing a lawn tennis. You're playing football यहाँ पे. तो इसीलिए बोल रहा हूँ football के these are like team sports, and you cannot really talk about individuals so much. लेकिन हाँ, you have to celebrate them. 100% हम बोल रहे हैं दोनों कि यार 100% Ronaldo is a goat. He'll remain a goat no matter what happens. Exactly. Ivanovic, I know, again right back option दे रहा हूँ यार. On his day, no one could play against Ivanovic in his prime. लेकिन the way he went down, मतलब इतना नीचे गिरा इन करियर ना, all of a sudden people are thinking नहीं भाई इसका लेगेसी खराब कर रहा है, कंटिन्यू मत कर. लेकिन आज के दिन में आपने पता नहीं कल देखा है कि नहीं, Ivanovic has a museum by himself of the trophies he has won. तो रोनाल्डो तो नेक्स्ट लेवल है यार, एंड आई नो ही इज वन ऑफ दोस गोट्स. तो आई थिंक वी विल ऑलवेज सेलिब्रेट हिम. लेकिन अभी के लिए फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, इवन एज एन ऑपोजिशन, मैं बोलता हूँ दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू गो विद द ईटीएच फिलॉसफी. और अगर रोनाल्डो कैन एबल टू डू दैट, वेल एंड गुड ब्रॉस, मैं बोलूंगा गिव हिम चांसेस. बट अभी के लिए नहीं लग रहा है, बस वही बोल रहा है. Exactly. Vishal is saying all goals cannot be at the same level for their whole life. Absolutely. That's human body. You cannot be performing at the age of 40 at the way you performed at the age of 25. Simple as that. People need to understand that. Pogba stands वाले भाई, उनको मैं फैंस कंसीडर नहीं करता. They just had Pogba. ठीक है, वो Pogba यूवेंटस गया तो वो यूवेंटस गए. They still come on the timeline to troll Bruno, but अब उनसे नहीं हो पाता. वो बेचारा Pogba तो खेलता ही नहीं है. He's still injured. तो उनके पास कुछ अभी बचा नहीं है कंटेंट के नाम पे. Cricket lover is asking, this is a really good question. Ankit bhaiya, how can we stop Saint-Maximin? As a Chelsea fan, what do you think United should do? भाई मतलब सेंट मैक्सिमम के साथ मतलब देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट यू हैव टू बेसिकली प्लान इट आउट. ओल्ड स्कूल जाओ. यू नीड टू हैव बेसिकली 2-3 लोग. इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही कम्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, सो आई डोंट थिंक लिसांड्रो विल कम इनटू प्ले इतना. तो आई वुड से दैट maybe have your winger kind of one man check on him. और I know Casemiro एक बहुत बड़े एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि Casemiro gets under the skin of the player, and if he plays, Exactly. I think Casemiro has to do something like that. क्योंकि reality ये है कि Saint Maximin, to stop him, it's really really difficult. लेकिन at the same time, pretty sure that as in he's not 100% fit. So maybe it's a good match for Casemiro to show what Casemiro has. Exactly. Right. So Sanjay is saying even I am a huge Kohli and RCB fan, and Simon is saying we could end up playing De Jong, and if we don't get the Champions League, I can't see him joining us. So to be at this point of time, the entire world is going to laugh at Ajax first and Frankie De Jong second, because Ajax manager he thought he just, because he's playing in the Champions League, he cannot get back in the Europa League, so he is coming to Europa League.
and most probably 90%, as Ankit Bhaiya said, Barca is coming to the Europa League as well. So Frankie de Jong, after all that drama of playing the UCL, gets benched, have barely started any game this season, and is coming to Europa League. What do you think, Ankit Bhaiya? What are यार you going to say? यार आई नो दैट आई वुड लव टू जॉइन इन द ट्रोल, लेकिन यार मैं एक डच फैन भी हूँ, अंशुमन भूल रहे साथ साथ में। तो यार सच में बोलो, मेरा एक्चुअली ऑल सिंपैथी गोज आउट टू फ्रैंकी de Jong हिमसेल्फ। यस, probably that situation should have been handled much better। वो क्लियरली पहले ही, आई नो एज पर फेब्रिशियो था, हमेशा बोल रहा था भाई आई डोंट वांट टू लीव बारसा, आई वांट टू स्टे इन बारसा, वही बोल रहा है। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन आप यू मस्ट ऐड दैट फ्रैंकी de Jong का जो सिचुएशन था फाइनेंशियली, ठीक है, जो बारसा और ओनिंग टू हिम, इसीलिए वो रहा है। और बारसा फॉर सम स्ट्रेंज रीजन जावी वाज प्लेइंग इन सेंटर हाफ, और जब जरूरत पड़ी सेंटर हाफ की अगेंस्ट इंटर मिलान गायब था बंदा। आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट स्टार्ट। सो you have to blame people around him, you don't have to blame Frankie de Jong। I know उसका बैड लक यार, और कुछ नहीं। हाँ, लुई वैन गाल ये भी बोला है यार आपको खेलना पड़ेगा ज्यादा अगर इफ यू हैव टू बी द मेन मैन। लेकिन आज के दिन में मिडफील्डर कोई है नहीं डच फुटबॉल में, तो आई नो विद वाइनैंडम आल्सो बीइंग आउट फॉर अ व्हाइल, तो लग रहा है कि फ्रैंकी de Jong को he might have to leave in January, क्योंकि यार I don't think he wants to play Europa League, does he? तो that has to be the case। लेकिन again if Barcelona will pay that money, अब Barcelona पे करेगी तो कैसे करेगी अब भगवान जाने यार, मतलब considering only if they win something which they want so soon। Exactly. So guys, just holding on for the comments for a while. Greenwood का arrest भैया confirmed हो गया। It has been confirmed by Greater Manchester Police. Oh, arrested again? Yeah, he is arrested again. So Yeah. Greenwood has been arrested again, guys. We will talk about this, but yeah, Tulasha is in the comment section. Thanks a lot for joining, Tulasha. Silva or PK? Very difficult, but I think I will just go somehow with PK. Because are we talking Thiago Silva or PK? Yeah. Come on, by Anshuman, मतलब I know PK has also been very long, I know ex Manchester United player है, I can understand that, लेकिन 51-49 कभी अच्छा let me put it that way, भाई सब लोग बता देना, I know यहाँ पर PK, I don't want to disrespect him, लेकिन I'm not comparing आज का PK, चलो it won't be fair। PK हाँ exactly, आज का तो क्लियर है सिल्वा इज अ विनर, बट इवन अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए, मतलब मैं चेल्सी का उठाता हूँ लेजेंड, ठीक है, चेल्सी का लेजेंड उठा रहा हूँ जॉन टेरी वर्सेस माल्डिनी, किसको पिक करोगे आप? ऑब्वियसली माल्डिनी। मैं वही बोल रहा हूँ, सिल्वा इज अ लेजेंड ऑफ द गेम ब्रो, सिंपल एज दैट। आप कहीं भी देखा तो ही हैज बीन योर लीडर। आप देखो एसी मिलान में, आप देखो पीएसजी में, ब्राजील में बेसिकली वो एक गेम मिस किया, उस गेम में क्या होता 7-1, सबको याद है। इवन आज के दिन में ही हैज क्रिस्टियनसन को फाइनली डिफेंडर बना रहा है। बारसा आज के दिन में क्रिस्टियनसन को मिस कर रही है क्योंकि सिल्वा ने उसको ट्रेनिंग दी है लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है। अभी भी ही इज द मेन मैन फॉर चेल्सी। तो मैं बोलता हूँ जो ऐसे लॉन्जिविटी रहा है और इतना हाई लेवल में रहा है, वो डिप नहीं किया है। आई वुड, मतलब मैं तो स्ट्रांग आर्ग्यू कर रहा हूँ भाई सिल्वा के लिए, नो टू वेज अबाउट इट वहां। ठीक है भैया, बट आई विल गो विद पीके बिकॉज़ ऑफ हिज even when he was there with he got that training with Puyol. We all know Puyol was the one who kept अच्छा था, मतलब correct. I'm not saying it's bad, don't get me wrong. He was the mainstay with every trophy that Spain won. मतलब obviously former United होके उसने पेन बहुत दिया है हमें। अच्छा, let me explain this way. जैसे अपना राफेल वारान वर्सेस सर्जियो रामोस होता था बहुत बार, नहीं? वहां पर सर्जियो रामोस, whether we like it or not, राफेल वारान बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आज के दिन में। लेकिन विदाउट अ सर्जियो रामोस कुड ही हैव डन व्हाट ही डिड? वही मैं बोलूंगा। someone like Ramos as well. He could have done the same thing without Varane as well. नहीं, लेकिन पेपे के साथ किया था भाई उसने। हाँ, तो पेपे के साथ, पेपे is a leader in himself. उसको ज्यादा कुछ नहीं था, Pepe is a leader in himself. He's still going strong, But when Varane used to recover for him, Pepe वही काम कर रहा था। Pepe के पास space था। Ramos was never brilliant defensively. He was a leader. वो जाओ और सबको ऐसी तैसी कर दो वाला mindset था उसका। So this is the भैया ये statement आया। Greater Manchester Police are aware of an allegation regarding a 21-year-old breaching his bail conditions, and an arrest has been made on Saturday, 15th October. Pretty sure we are talking about Greenwood. यहाँ everyone who is joined late. Oh my God, भाई, मतलब this is crazy. पता नहीं, अब ये भी हो सकता है, maybe I'm just guessing कि यार with report saying that Greenwood को allow करा जा रहा है टीम में वापस,
maybe this is something that again there are parties or against him जिन्होंने plant किया होगा कुछ. It's quite possible. मैं सिर्फ speculate कर रहा हूँ. Again मेरा same है like Anshuman. This guy doesn't deserve to be back because it was very clear. अगर teammates आपके comfortable नहीं है, how can you come back? 100% I agree. But somewhere down the line ये coincidence बहुत ज्यादा नहीं हो गया अंशुमन, क्योंकि कल ही reports आई थी that he might be back and आज ही आई है, तो थोड़ा सा यहाँ पर I feel that's little bit more controversial. Yeah, exactly. अरे Now, मानव कैसे हो? even if you're, at this point of time, 21 साल की age में, if you don't understand how a bail works, you are trying to basically get in touch with the person you have basically abused, offended. So भाई कौन सी दुनिया में जी रहा है भगवान जाने. And this is coming from Greater Manchester Police. It's too complicated, Anshuman. I don't think Manchester United should allow him again. That's clear. नहीं, he remains suspended and arrest होने से उसी का केस खराब होता है. पहले उसका ऑलरेडी केस जा चुका है. This basically dampens his case even further कि भाई तेरा हो चुका भाई. Generational player, everything totally fine, but what you have done, or as Vishal bhai said, as Celia said, is not even done by a grown up, and people talk about him being a kid. He's not a kid when he's doing that. He's a 20-year-old and he's doing that for a long time. So Manav is saying Gimares versus Casemiro will be the battle to watch for me, the winner of this battle. We already talked about it, Manav, and Ankit bhai said the same thing. नहीं बिल्कुल मानव tactically is brilliant, by the way. shout out जाता है मानव को, by the way. Yes मानव, absolutely right. Plus I think आशीष भी है chat में. quickly मैं shout out देना चाहूंगा आशीष रजौरा को, क्योंकि I think आशीष का birthday आज. तो everyone, if you can wish आशीष happy birthday, it'll be brilliant. We have comment ले लेता हूं, where is आशीष? मैं एक बार comment उठा लूं. आज मेरा दिन पे मेसन ग्रीनवुड के साथ क्या हो गया. he's just trying to have a fun वहां पर, लेकिन कोई नहीं. Yeah, Ashish का birthday है, तो happy birthday Ashish. Ashish भाई, happy birthday first of all. Yeah, Ashish, if I'm not wrong, you're a Barca fan. हम बात किए थे about El Clasico. We'll be coming back to it, time permits तो. लेकिन कोई नहीं है. Again, मतलब I call him John Terry of our channel. So, yeah, undisputed leader यार, वो तो कोई doubt ही नहीं है यार उसमें. रामोस और पीके में भी कोई choose करने बोल रहा था भाई, रामोस any day है. मैं लीडरशिप एलिमेंट बोल रहा था, जैसे थियागो सिल्वा ब्रिंग्स दैट लीडरशिप. एक होता है ना, थियागो सिल्वा का लीडरशिप एलिमेंट नो वन इज गोइंग टू इवन चैलेंज. कंपेयर ही नहीं करता मैं लीडरशिप एलिमेंट कंपेयर नहीं कर रहा. बट देन व्हाट पीके हैज अचीव्ड थ्रू आउट, ठीक है, एंड इवन आफ्टर प्योर लेफ्ट, he was the one who took Barca to the next stage. It was not like obviously पिछले 2 साल में भी है, काफी सालों तक he was the main guy. मतलब I get जो बोल रहे हो. Yeah, it's not like कि मतलब अगर तुम बारसा के लिए इतने टाइम तक इतने बड़े प्लेयर हो यार, तो बारसा इज नॉट खुद सा क्लब. वही वाली बात है ना फिर. और स्पेन के साथ भी भाई, मतलब he actually arguably he has won everything, तो fair enough. एक सिल्वा के अगेंस्ट एक थॉट ये भी जाता है ना, for someone like Silva, that he played with PSG for such a long time that he was not challenged enough. जब भी वो CL में खेला, he got battered. चाहे वो 6-1 हो, चाहे वो 4 गोल खाना हो, it was all. He was part of that. Yeah, नहीं, I hear you to some extent. So yeah, and we have a Spain fan out here, Ramos Silva पीके, मतलब इसकी तो ऐसी की तैसी, मतलब ये सुनता ही नहीं भाई किसी की. मैं एक्चुअली एग्री करता हूं ऋषभ से, लेकिन to be honest सच्चाई ये है. Exactly. Mascherano is there as well. So there we have many leaders. Both the teams in the past. चाहे वो बारसा हो, रखते हैं भाई, welcome to the stream. Whether it's Barca, whether it's Real Madrid, we have seen, so many leaders with these teams. चाहे वो Piol हो, उसके बाद PK for some time, he was a leader out there for some time. After that, Messi took over the leadership. उसके बाद फिर it was out and out Messi, and then PK धीरे he has started to fade away. But then वही है कि इतने साल तक एक पर्टिकुलर, अभी सबसे बड़ा एग्जांपल देख लो भैया, कांटे, he is going to miss the World Cup. अरे ह्यूज सेटबैक यार. लेकिन वही है, मतलब प्लेयर्स लाइक पीके, कांटे, एस्पिलिक्वेटा, रियलिटी है. एज मच एज मैं चाहूंगा नहीं विद रिस्पेक्ट टू कांटे स्पेशली, क्योंकि यार वो प्लूटो सा है, वो इंडिया, वो है ही नहीं, अपना अर्थ का बंदा नहीं है वो. द व्हेन ही प्लेज लाइक क्रेजी. लेकिन रियलिटी ये है दैट दीज आर लेजेंड्स, बट दे नीड टू मूव ऑन, क्योंकि यार आई थिंक बीट इंजरीज, बीट लैक ऑफ पेस, इट इज टेलिंग अभी. एंड अगेन हम सैलरी की बात कर रहे थे ना, अबाउट फेलिक्स इन एथलेटिको मैड्रिड. Kante, literally, I know that he is one of the highest paid in the Premier League. So
with him getting that, और वो demand भी कर रहा है, his camp is demanding a long term contract. I don't know what basis. As much as I love the Exactly. guy, absolutely, and I think neutrals भी काफी पसंद करते हैं भाई कांटे को, लेकिन Exactly. As बहुत a United surprising. fan, लोग अभी भी बोल रहे थे यार उसको ले आओ, बट आई वाज लाइक नहीं भाई, अब वो ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए जहां पे उसको चेल्सी नहीं रखना चाह रही. If Chelsea is willing to sell one of the best CDMs that ever played for them, मतलब समझ जाओ कि उसका दिन हो चुका है complete. So हाँ, someone like रियलिटी Spurs वही है. come out and take मैं him. फिर भी अंशुमन मैं चाहता हूँ यार, मतलब आई नो लास्ट 48 आवर्स में जो भी हुआ है विद कांटे न्यूज, विद कॉन्ट्रैक्ट न्यूज फर्स्ट, और फिर ये इंजरी न्यूज, मैं तो फिर भी मैं वो ऑड वन आउट हूँ जो बोलूंगा भाई कांटे आपका ऐसा हीरा है ना, जब तक वो हीरा एकदम ही मतलब बेसिकली टूटे नहीं ना, उसको खेलते जाओ. मतलब आई वुड से सो मच, आई एम सो इन लव विद कांटे. कोई नहीं. Exactly. But whether he stays or not, he's basically putting a nail in his own coffin. रह के भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वो दिख रहा है. मतलब ऐसा बंदा तो अब हम शायद नेक्स्ट सीजन जूड बेलिंगम के लिए जाएं. If we pay like जितने हम 100 मिलियन देने के लिए तैयार थे for someone like Frankie de Jong, and English players के साथ अपील ऑलरेडी बहुत ज्यादा है for a club like United, club like Chelsea, Liverpool. So English players को ऑलरेडी अपील करते हैं. So if we are going with a package, with 115 million, then we will see whether Dortmund basically rejects us or basically takes that. At this point of time, I would love to see Frankie de Jong, but ऐसा नहीं है भाई कि we are just going to पिछले साल हम desperate थे, शायद अगले साल हम ना हो, because there will be Jude Bellingham, in the market as well. So there is report coming आज भाई, by the way, कि Frankie de Jong again his camp might be interested in talking to Chelsea again for January. जनवरी में मुझे नहीं लगता भैया, ये जो भी न्यूज़ लेके आया है, जनवरी में 125 मिलियन का मूव, ये बोली थोड़ा पागल सा है, but इतना पागल मुझे नहीं लगता कि he will just go out. And even Dortmund, they are in the CL, they are challenging for the Bundesliga, so this is one of their best chances, because बहुत slow start किया इस बार. Someone like when you look at Bayern Munich, even against them they were 2-0 up and ended up with 2-2. So हाँ, लेकिन भाई जर्मन फुटबॉल से एंकुंकू तो इज समवन दैट वी आर एडिंग एनीवे, सो लुक्स लाइक बॉली कर रहे हैं भाई, मूव्स तो कर रहे हैं अर्ली, तो आई वोंट बी वेरी सरप्राइज, देखते हैं if de Jong has exactly. Rajesh bhai, thanks a lot for the super chat. Thanks a lot for joining in. And France has too many to fill his absence. Kamavinga, Tchouaméni, भाई जॉर्जिनियो फ्रांस में नहीं है भाई. डैनियल भाई जॉर्जिनियो को फ्रेंच दे दो सीधे भाई, वो ओरिजिनल ब्राजीलियन है वो डैनियल, एंड देन ही मूव टू इटली ऑब्वियसली एज एन he plays for Italy. वो है ब्राजीलियन but he plays for Italy. हाँ. What about the goat Maguire? भाई जिसका कमेंट मिस हो रहा है, I will take it again. Picking PK over Silva is like PK Bale over Neymar. Everyone has a simple choice. People have, people are entitled to their opinions, but एक्चुअली बेल के सिल्वा के साथ बेल से याद है, बेल से मुझे याद है, मैं वापस से रिपीट करूंगा. आई डोंट नो, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पर कोई स्पर्स फैन नहीं है, लेकिन इसलिए मैं बता दूंगा भाई, सब लोग, मैंने एक शॉर्ट रिलीज किया था एंड पीपल लव्ड इट, और ये फैक्ट है कि भाई बेल आफ्टर लीविंग टॉटनम एक ही सीजन नहीं जीता है ट्रॉफी, ओनली सीजन दैट इज व्हेन ही वेंट बैक टू टॉटनम. Exactly. So actually बेल काफी अंडररेटेड होते हैं भाई over the years. उसका issue is the mentality, the attitude towards the end, लेकिन I think the guy is actually legend. Real Madrid fans इतना respect नहीं करते, I don't know for whatever reason. Exactly. मतलब वो तो रोनाल्डो को रेस्पेक्ट नहीं करते, so उनके तो बात ही हटा दो. At times they have booed Ronaldo in the Bernabeu, तो वो बेल को क्या रेस्पेक्ट देंगे, and that guy is basically your out and out top scorer. मतलब 430-40 गेम्स में 450 goals and he still gets booed. So क्या ही बोल सकते हैं. What about the goat Maguire? See यार, Maguire को जितना हेट देना है दे लो. At this point of time you cannot get rid of him, first of all, क्योंकि जितने हम मांगेंगे उतना कोई देगा नहीं. Second of all, he is still a good squad player. जहां पे जब तुम्हें वरान मार्टिनेज को रेस्ट देना है, you can play the likes of Lindelof and Maguire. हाँ, इनमें से अगर कोई एक किसी भी तरीके से निकाल दिया फिर अलग की बात है, but till the time Maguire is here, he is definitely going to give you important minutes in Carabao, in FA Cup. वो अभी खेल रहा होता, अभी वरान मार्टिनेज रेस्ट कर रहे होते if he was not injured. So लेकिन अंशुमन just neutral perspective there quickly, देखिए मतलब for Maguire himself, I think जैसे हमने बोला था about Greenwood, I know totally different situation है वो, लेकिन sometimes you need a refresh button. Maguire को चाहिए refresh, और एग्जांपल देना चाहूंगा स्मॉलिंग का. आज के दिन में people who follow Serie A, भाई I know Smalling
अगर आप प्रीमियर लीग में खिलाओ आज के दिन में, ही विल बी नोवेयर व्हाट ही इज डूइंग इन सीरिया। लेकिन रियलिटी वो है दैट उसको एक कॉन्फिडेंस मिल गया है, ही हैज अ लाइफ, ही हैज लर्नड इटालियन, ही इज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ रोमा, जोसे मोरिन्यो का गो टू गाई हो गया यार वो वापस से। तो एग्जैक्टली, ही स्कोरिंग गोल्स फॉर फन, मतलब ऐसा लग रहा है कि साला स्मॉलिंग डिफेंडर ना हो गया, स्ट्राइकर हो गया। हर हाँ, गेम में, हर दूसरे तो गेम में एक गोल आ जाता है उसका हेडर। एग्जैक्टली, और वो इतना फिट है भाई। इफ यू सी, तो फॉर मी मैग्वायर, मेरे लिए ऑनेस्टली ही नीड्स अ रिफ्रेश बटन, ही नीड्स अ रीसेट बटन, गो टू अ डिफरेंट लीग। जैसे आई नो जो हार्ट भी ट्राई किया था, जो हार्ट को तो गोलकीपर है, अलग ही स्टोरी था, लेकिन आई थिंक स्मॉलिंग इज कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर मैग्वायर। आई नो इट्स टू अर्ली फॉर मैग्वायर कंपेयर्ड टू स्मॉलिंग के करियर में था पॉइंट, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा अरे मानव तू एग्जैक्टली, टूटे हुए तो क्या तू टूटेगी यार, मतलब कम ऑन मानव यहाँ पर ज्यादा ट्रोल कर रहा हूँ ना, टॉटनहम में पकड़ के पीट पीट के टॉटनहम को मारेंगे तो हर मुझे। कोई ट्रोल करता है। हाँ नो, यार, वी आर मतलब जस्ट मिसिंग पोटैटो बॉय, मतलब मुझे अरे बस मैं एक ही। एक और मैं बता देता हूँ भाई मानव, और सब लोग ये भी सुनिए, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। सब लोग ने मैंने इवानोविच का नाम लिया स्ट्रीम में, ठीक है। इवानोविच का पर्सनल म्यूजियम है, उस पर्सनल म्यूजियम में आपके पास मिलेंगे 15-20 ट्रॉफी। टॉटनहम के भाई एक 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 ट्रॉफी है जो हमने ही जिताया था, वो भी दान में दिया था हमने 2008 में। उसके बाद में है इंटर टोटो कप, आई डोंट नो व्हाट कप, बेसिकली दैट इज व्हाट टॉटनहम है। ऑडी ऑडी कप। कप, इंटर टोटो ज्यादा बोल दिया एक्चुअली। Spurs and start bottling. Even if Arsenal bottles, they have to bottle like big time. They see they are not going to win the Premier League. You know, वो प्रीमियर लीग नहीं जीतने वाली है, मैंने बोल दिया है, और मैं हमेशा बोलूंगा लास्ट डे तक। इवन इफ ओके, आई थिंक ऑलराइट, अंशुमन सॉरी का, सॉरी गाइस, सो हाँ हाँ, मेरा बेटर मेरा बेटर। नेटवर्क थोड़ा गया, ठीक है। हाँ, अंकित भैया, डू यू थिंक आर्सेनल एज अ रियल कंटेंडर? डू यू सी आर्सेनल एज अ रियल कंटेंडर? इट पेन्स मी टू से इट यार, मतलब देखो मैं स्पर्स को कितना भी ट्रोल करूँ ना, मैं कह सकता हूँ आर्सेनल कैन नॉट बी डन दैट, क्योंकि आर्सेनल का एक मेंटालिटी ऑफ द क्लब क्लियर दिख रही है। यस, स्पर्स में कॉन्टे है, कॉन्टे हैज अ विनिंग मेंटालिटी, लेकिन एक डायरेक्शन ऑफ फुटबॉल नहीं दिख रही वहां पे आज के दिन में भी। आर्सेनल की एक डायरेक्शन ऑफ फुटबॉल दिख रही है, एक आइडियोलॉजी दिख रही है, और उनका जो स्क्वाड है आप ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा यंगस्टर्स से भरा हुआ स्क्वाड है। तो फॉर मी, अनफॉर्चुनेटली आर्सेनल कैन नॉट बी रूल्ड आउट टोटली, बट अगेन वो बट क्यों मैं बोल रहा हूं, अगर आई डोंट वांट इंजरीज ऑन एनीवन, लेकिन कल को बाय चांस अगर मैन सिटी का मेन प्लेयर और प्लेयर्स को इंजरी हो जाता है, ट्रस्ट मी आर्सेनल आर वन ऑफ द फेवरेट्स। अभी के लिए भी ऑन पेपर दे आर, बट रियलिटी इज दे आर द क्लोजेस्ट टू सिटी, बट नो वन एल्स एंड वही बोल सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भैया, बेस्ट ऑफ द रेस्ट। इवन इफ सिटी सफर्स इंजरी, ठीक है, उनके पास स्क्वाड है। इफ समवन लाइक पार्टे और समवन लाइक जीसस गेट्स इंजर्ड, आर्सेनल विल बी लुकिंग फॉर आंसर्स दे डोंट हैव। वो बिना पार्टे के हमारे अगेंस्ट खेले, उनका दिख गया वहां पे। दे हैड एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर द गेम। मतलब 20 मिनट वहां पे फर्स्ट हाफ के बाद दे हैड कंट्रोल, जहां पे दे एंड अप स्कोरिंग, बट फिर वही इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो कुछ गेम से ले ले, they tried for the second goal, they hit on the counter। तो वही वाला सीन है कि I still feel आर्सेनल के पास कोई प्लान बी नहीं है, ठीक है। प्लान भी, लेकिन स्क्वाड फिर भी अच्छा है यार, मतलब आई नो आप प्लान भी नहीं बोल सकते हो, लेकिन आप फैबियो वियेरा देख लियो, आप मार्किनियोस देख लो, मतलब दे हैव अ थिंग फॉर द फ्यूचर एज वेल। तो मुझे लगता है आर्सेनल इस बार मतलब वही है, आप लास्ट 2-3 बड़े गेम्स में अच्छा खेले तो वो प्रूफ होगा मेरे लिए दैट वो कर सकते हैं यार। ग्रैंड जका हैज गॉट द लीडरशिप एलिमेंट, वापस आ गया है, तो मुझे लग रहा है दैट अगेन आई हेट टू से इट, लेकिन आर्सेनल है यार, मतलब we cannot rule them out at all with the squad. No, for me, भैया, I totally agree what you are saying, but for me they are not challengers, for me they are the best of the rest। कि हाँ, बेस्ट अभी ऑफ द रेस्ट ही है, मतलब हाँ, बेस्ट ऑफ रियलिटी द वो है। रेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है। Before the season I was not taking them as top 4 contender, to be very honest। और अभी भी I still feel after the World Cup we will see a totally different Arsenal, जहाँ पे एक दो इंजरी हुई and they will start to plummet, जो होता है उनके साथ पिछले हाँ, साल भी लेकिन गैब्रियल जेसुस नहीं खेलता ब्राजील के लिए इतना, जो रीसेंट टीम है ब्राजील का, ही इज नॉट स्टार्टिंग गेम्स, तो हाँ, मतलब वो नहीं, मैं प्रीमियर लीग में ही गेम्स इतने होते हैं ना, व्हेन यू हैव यूरोपा, यू हैव प्रीमियर लीग। अभी तो चलो तुम्हें एनकेतिया से काम चला रहे हो, व्हेन यू गो इनटू नॉकआउट्स, तुम्हें एनकेतिया नहीं, तुम अपना ही प्लेयर खिलाओ, तुम यू आर गोइंग टू प्ले सम लाइक जीसस। सो आई थिंक यस, प्रथमेश भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े से कमेंट्स हैं सबके मिस हुए हैं, रियली सॉरी। यस, we are still looking to get that top spot in our group, and that's why it's very difficult at this point of time to play the youngsters, because we have to win every game, because this was a group where it's Real Sociedad or nothing. So we have already lost the first game against Real Sociedad, and we will try to make sure that we win against them on the last game day,
but this is something that has made difficult, for the youngsters to get in, that we have to keep on winning every game. That's why it was so important that we got the win last time. Otherwise, अरे मैं qualifiers बोल रहा हूँ ना, यूरोपा लीग इस बार बहुत डिफिकल्ट होगा, मतलब आई नो दैट इट्स जनरली exactly. आल्सो नॉट एज इजी एज पीपल थिंक इट इज, लेकिन आप देखो मतलब यूवेंटस आर गोना गो देयर, लुक्स लाइक इट, और यूवेंटस विद अ मे बी पॉल पॉगबा फिट, मे बी किएजा फिट, दैट यूवेंटस के साइड, फिर यू आर हैविंग सेविया जो ऑलवेज लव द यूरोपा लीग नो मैटर जो साइनिंग्स दे हैव मिस्ड आउट ऑन, तो देयर आर लॉट ऑफ साइड्स, एटलेटिको मैड्रिड माइट लैंड अप देयर, हु नोस, तो काफी कंपटीशन होने वाला है यूरोपा लीग में. Exactly. The way says injuries are the only way they will bottle it. Yeah, that's what I'm saying. I think they will bottle the top four. They're still not in the when it comes to getting into the challenge for the title. But yeah, they can miss out on top four. We have seen that. Picture season why almost 37 games week tak, after the initial 3 games के बाद वो रहे थे, in and around. They were holding form at number 4 और आखिरी के 3 गेम में जाके हार के, और they ended up getting out of the Champions League. So ये उनके साथ है. पार्टे इज द मेन गाइड. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड. ऋषभ, सिटी का बुरा सीजन कब आएगा यार? आपको 2 सीजन पहले का याद दिलाऊंगा. सिटी एक समय पर जहां लिवरपूल है ना आज के दिन में, वहां थी, और विल बैक टू बैक गेम जीते थे, एंड दे वेंट ऑन विनिंग द लीग. तो सिटी का बुरा टाइम आएगा, बट बुरा टाइम भी आएगा ना, वो ऐसा स्क्वाड है ना कि बुरा टाइम आने के बाद भी, और rather पहले ही वो लोग या तो लीग जीत जाएंगे, या तो उसके बाद भी दे कैन कवर अप ऑन. दैट इज व्हाई द डेंजर इज द सिटी. मैं तो बोलता हूँ यार, अगेन मतलब मैं, यस आई नो ऑन अगेन यूनाइटेड रोड चैनल मैं बोल रहा हूँ ये, लेकिन मैं जनरली बोलता लिवरपूल मेरा, आई कंसीडर लिवरपूल एज वन ऑफ माय मेन ऑपोजिशंस, ठीक है, ओवर द इयर्स, बिकॉज ऑफ वो बेनिटेज मोरिनियो वाला डेज, सिंपल एज दैट. तो फिर भी इस वीकेंड का बात करो ना, तो आई एक्चुअली वांट सिटी टू ड्रॉप द पॉइंट्स, क्योंकि यार फार्मर्स लीग बना दे रहे यार ये लोग. कम ऑन, प्रीमियर लीग एक ऐसा लीग था लोगों का एरिया जो फार्मर्स लीग नहीं था, इसको भी मत बनाओ यार, सिंपल सा बात है. एग्जैक्टली. और जैसे मानव ने बोला ना, पेप वाज बोर्ड, तो भाई ये तो ऑलरेडी ट्रोल काफी देख चुके हैं हम, दैट ही ब्रॉट इन आर्टेटा और उसको ये सब. सो जब तक वो कुछ जीतेगा नहीं, तब तक ऑब्वियसली एज अ ट्रोल इट्स फन. दे आर बिल्डिंग समथिंग भाई, दे आर बिल्डिंग समथिंग, बट बिल्डिंग समथिंग से कुछ नहीं होता. दे हैव ऑलरेडी स्पेंट 300 मिलियन. ठीक है, दे हैव स्पेंट 300 मिलियन. लोगों को लगता है कि भाई आर्टेटा ने पूरी एकेडमी ही खिला दी है, एकेडमी को वर्ल्ड क्लास बना दिया उसने ऐसा नहीं किया भाई. लुक एट द मनी दे हैव स्पेंट. उनके प्लेइंग 11 में अपार्ट फ्रॉम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम साका, कौन सा बंदा एकेडमी का है हु इज अ रेगुलर? रामसेल बॉट, सलीबा बॉट, ठीक है, चलो सलीबा का लोन अच्छा था, बट ही इज आल्सो बॉट. ठीक है, गैब्रियल, जिनचेंको, बेन वाइट, आगे तुम्हारा पार्टे, तुम्हारा जाका, आगे फिर तुम्हारा मार्टिनेली. कम में खरीदा, बट ही इज आल्सो ब्रॉट इन. Got it. नहीं, you have a point. So it's not like कि he has improved सबको drastically. वो खरीद के लाया है, he has a plan in mind, he is going with that. अचीव कर पाता है या नहीं, वो बताएगा रिजल्ट भाई साहब. आई थिंक डिफरेंस क्या है ना आर्सेनल में, आई थिंक वो कंटिन्यूटी रखे. बेसिकली आपको याद है तो इवन अंडर आई थिंक 2020 सीजन था क्या, 2020-21 सीजन, जहां पर आर्टेटा वाज अंडर फायर कि वो हो जाएगा सैक एंड ऑल दोस, लेकिन आर्सेनल केप्ट विद हिम और ही केप्ट विद द आइडियोलॉजीज. तो सम पॉइंट दे विल गेट इट राइट. तो वही हुआ है. मैं वही बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि भाई अगर ऑब्वियसली आई हैव सेड दैट अगर आर्सेनल टॉप 4 में जाती है, आई विल डेफिनेटली डेट आर्टेटा एज अ वेरी गुड मैनेजर, बट अभी स्टिल लॉन्ग वे टू गो. अभी भी 28 गेम बचे हैं भाई, एंड वी हैव सीन इन द पास्ट व्हाट हैज हैपेंड. रिचार्लिसन विल बी द स्ट्राइकर फॉर ब्राजील, सेज आशीष भाई. व्हाट डू यू थिंक अंकित भैया? या यहाँ पर मैंने मानव का कमेंट देखा था दैट वो ये आई थिंक मानव ने भी पूछा था, ये वाला ना, ये रोबर्टो फर्मिनो, आई थिंक दोनों में से एक ही ले जा पाएंगे. मानव इज एग्जैक्टली राइट एज ऑलवेज यार, लेकिन मुझे लगता है ना, मतलब रिचार्लिसन, आई एग्री विद आशीष, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक और एक्स्ट्रा स्ट्राइकर, they might actually go with Gabriel Jesus in the end. एक होता है, yes, फर्मिनो को वीक इन वीक आउट फुटबॉल नहीं मिल रही है, तो आई डोंट थिंक he has as much chances. बहुत अच्छा फॉर्म में है, he can drop back, लेकिन ड्रॉप बैक करने के लिए आपके पास पकेटा है. पकेटा, you have a second striker, you have a Cam already there. Neymar has also played that role for Brazil. A lot of times ज्यादा सेंट्रली खेलते हैं in Brazil compared to his club team. तो मुझे लगता है they might go with Gabriel Jesus because Gabriel Jesus can play both the roles ज्यादा. तो वो मेरा फील है. बट हाँ, रिचार्लिसन डेफिनेटली यार वो तो स्टार्ट करेगा ऑन फॉर्म. ऑलराइट, सो गाइस, बिफोर आई टेक एनीवन्स कमेंट्स, अंकित भैया के चैनल का भाई जो भी हो यहाँ पे, जो अंकित भैया के चैनल को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है. नोटिफिकेशन ऑन कर लो. हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि भाई
सब्सक्राइब करना इज अ बेसिक थिंग, बट नोटिफिकेशन मत भूलो। अदरवाइज अगर तुम वीडियोस नहीं देखोगे सब्सक्राइब करने के बाद तो फिर फायदा क्या, यू नो। सो दोनों चैनल के नोटिफिकेशन ऑन कर लो भाई, और भैया का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जस्ट क्लिक ऑन इट, मेक श्योर यू सपोर्ट, यू नो, ऑलमाइटी ब्लूज विथ ऑल योर हार्ट, एंड यू ऑल नो अंकित भैया इज वन ऑफ द, यू नो, बेस्ट guys out there when it comes to just talking about everything. So सिर्फ चेल्सी नहीं है, you have content from all अरे over the world. मैं पागल हूँ यार मैं फुटबॉल के पीछे जस्ट लाइक अंशुमन पुट इट दैट वे। चलो, ब्राजील और अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फेवरेट्स, डेफिनेटली ब्राजील फॉर मी। Yeah, they are stacked. जो वर्ड बोलते हैं ना स्टैक, वो ये अभी इंटरनेशनल फुटबॉल की मैन सिटी लग रही है ऑन पेपर, यू नो। ऑन पेपर है, लेकिन अर्जेंटीना मतलब कैन वी गो, वही हम आर्सेनल की बात कर रहे थे, अर्जेंटीना जो फॉर्म दिखाई है ना, हाँ वो थोड़ा हो जाता है दैट हैव दे पीक टू अर्ली वाला चीज है अर्जेंटीना के साथ में, दैट माइट बी द थिंग, बट हाँ डेफिनेटली यार। अरे यार प्रथमेश, थैंक्स फॉर दैट क्वेश्चन यार। चेल्सी भाई, चेल्सी को इम्प्रूव करना है, पहले तो भाई इंजरीज कम हो वो सबसे पहले है, वो पता नहीं पॉटर कर पाएगा कि नहीं, समहाउ इस बैकरूम स्टाफ समथिंग इज टू बी डन, क्योंकि यार सबसे पहले आई थिंक मोर देन पॉटर, बर्ली क्या मिस्टेक कर रहे हैं ना, यस ही इज हायरिंग एंड फायरिंग वो कर रहे हैं प्रॉपर, अब्रामोविच पार्ट 2 हो गए, लेकिन आई थिंक फिजियोथेरेपिस्ट दे वर एक्चुअली यू नो लेट गो ऑफ द जॉब, और डीडी ड्रॉगबा आकर बोल रहे हैं दैट दिस इज नॉट द राइट थिंग। यस अब्रामोविच के अंडर होता था ये, लेकिन नाउ letting go physiotherapist for no reason, I don't understand that. I understand having a new start, और ये क्या हुआ है मेरे ख्याल से जो इंजरीज हो रहे हैं ना, somewhere down the line ये physiotherapist etc you know getting fired, हमारा जो maybe नया person who's come in is not really up to the mark right now. In the AC Milan game, I think Reece James का एक moment था जहां पर he was feeling एक थोड़ा सा discomfort उस सेकंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉटर डिड नॉट टेक हिम ऑफ, सो पॉटर की गलती, क्योंकि यार गलती नहीं बोलूंगा, लेकिन वही ही हैजंट अंडरस्टूड द फिजिकलिटी ऑफ द प्लेयर्स इनफ अभी तक, तो मे बी ही वाज काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट दैट नहीं ही विल पुल थ्रू, लेकिन वी वर 2-0 विनिंग एट द टाइम अगेंस्ट 10 men, तो वी शुड हैव गॉट हिम ऑफ पहले, इवन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग 5 मिनट रुक के। फिजियोथेरेपिस्ट जो भी था, दे डिड नॉट से रीस जेम्स टू बेसिकली यू नो जस्ट यू नो कम ऑन अ स्ट्रेचर और यू नो बेसिकली टेक क्रचेस, आराम से जंप करके आ रहा था भाई। So that is the main problem when it comes to these things. So I think it's more off field than on field. On field, I'm confident of Potter. Potter has a philosophy. It is so difficult to, मतलब आप अगर उसका स्टडी करो ना, बहुत ही difficult to tell कि आज प्लान क्या होगा पॉटर का. That is the best part of Potter. जो टूकल डॉर्टमंड के दिनों में दिखता था हमें. तो I would say that definitely you know Potter has it in him. लेकिन वो ये टाइम इज मनी वाला चीज हो जाता है ना चेल्सी में। यहाँ पे मैं आई थिंक अंशुमन का थोड़ा सा इंटरनेट ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पे वो चेंज कर रहा हूँ, बस एक सेकंड दे दो मुझे। हाँ कोई नहीं, मैं तब तक कमेंट्स लेता हूँ, गो अहेड मैं कमेंट्स ले रहा हूँ। तो संकेत मैं लेता हूँ आपका। संकेत भाई मैंने देखा अगेन अंशुमन इज ट्राइंग टू टेक एज मेनी कमेंट्स एज पॉसिबल, इट्स नॉट इजी बीइंग अ लाइव स्ट्रीमर सच में, तो भाई सब लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, लेकिन मच लव टू एवरीवन, अगेन डू नॉट फॉरगेट हिट दैट लाइक बटन। अंकित भैया, कैन चेल्सी गो फॉर लोटारो मार्टिनेज? यू नो व्हाट, लोटारो मार्टिनेज हमारे साथ लिंक हुआ था आर्ग्यूबली और रादर आयरॉनिकली, जब लुकाकू को हम दे रहे थे इंटर को वापस यू नो वहां पर ऑन लोन, तो वहां पर एक डील होने वाला था एज पर रिपोर्ट्स की लोटारो कमिंग दिस साइड, लुकाकू गोइंग बैक, लेकिन अगेन लोटारो और लुकाकू के बीच में प्यार है जो भी बोलोगे, तो ही प्रॉब्ली गोना स्टे। लेकिन द वे चेल्सी प्ले रादर द वे पॉटर प्लेस, हाँ आप बोल सकते हो व्हाई कांट लोटारो प्ले अ पास्कल ग्रोस वाला यू नो रोल जो ब्राइटन में खेलते थे, बट समवेयर डाउन द लाइन मुझे लगता है लोटारो इज नॉट एन आउट एंड आउट गोल स्कोरर, एक होता है ना नेचुरल फिनिशर, वही हमारी इश्यू है। हमारी इश्यू क्या है, वी हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इन ऑन द विंग्स, हमें चाहिए मोर क्रिएटिविटी सेंट्रली और समवन अप फ्रंट हु कैन स्कोर यू द गोल्स। आई डोंट थिंक लोटारो फिक्सेस दैट, तो इसलिए मैं तो आई डोंट सी लोटारो इज आइडियल फिट प्रीमियर लीग के लिए वीक इन वीक आउट, ही इज अ ग्रेट प्लेयर अदरवाइज। Yeah, you know, people as United fans, they also ask me, you know, why I hate Lautaro Martinez. मतलब एक तो मुझे ना एक चीज कभी-कभी नहीं समझ में आता कि भाई if someone is not fitting the system या फिर someone I really don't, you know, want to play for us because system वाली चीज है। अरे भाई Lautaro Martinez मेरा पैसा लेके थोड़ी भाग गया है कि मैं उसको हेट करूं, you know? So I don't understand कि भाई अगर मुझे कोई criticism मैं कर रहा हूं उस बंदे की, when you look at Lautaro Martinez, he's a two other, you know, दो स्ट्राइकर अगर खेल रहा है, Lautaro Martinez looks really good. यूनाइटेड खेलती नहीं है दो स्ट्राइकर, आई हैव सेड दैट बिफोर ऑन द स्ट्रीम कि भाई यूनाइटेड नहीं खेलती दो स्ट्राइकर, एंड दैट्स व्हाई वी हैव नॉट बीन लिंक्ड विद एनी ऑफ द सिस्टम प्लेयर्स। एरिक टेन हाग जब से आया है, यू नो,
Skriniar linked हो रहा है, PSG Skriniar linked हो रहा है, you know, Chelsea same with Guardiola, you know, he got linked to PSG, Chelsea same has happened with Bastoni, Spurs. So these are the guys, these are the teams which play three at the back. You know, वहां पे वो सबके लिए वो उससे होते जा रहे हैं वो लिंक. यूनाइटेड से नहीं हो रहा है because we know we are not going to play him. You know, we are not going to play that system. और अगर हम किसी बंदे को लेके आए जो सिस्टम में कंफर्टेबल है, so it start to get a bit worrisome. Same हो रहा है मगवायर के साथ. 3 at the back, he plays so well for England. 2 at the back में आते हैं इसकी हालत खराब हो जाती है. So yeah, Arsenal Spurs need 1 or 2 matches start to bottling. What do you think about that, Ankit भैया? अच्छा सॉरी मैं म्यूट में था. I just realized. Okay. यार देखिए आर्सेनल स्पर्स नीड 1 or 2 मैचेस स्टार्ट बॉटलिंग. भाई विद स्पर्स आई कैन स्टिल से, क्योंकि यार आप देखो कुलुसेव्स्की जैसा प्लेयर अगर वो मिस कर रहे हैं तो क्रिएटिविटी खत्म होगी उनकी. उनका जो सप्लाई हो गया ऑन वन चैनल खत्म हो गया. लेकिन नाउ सॉन इज बैक टू फॉर्म. तो समवेयर ऑन द लाइन आई वुड से दैट यस आई वुड लव टू अग्री. बट वही जैसे मैंने बोला है, अपने अपने घर में पहले झाको. अभी बीइंग अ चेल्सी फैन आई वुड लव टू से यार वी आर नॉट वन ऑफ दोस क्लब्स. 100% I agree. लेकिन as things stand right now, I think in terms of squad, Arsenal and Spurs have a better squad than I think probably Anshuman will agree than both our clubs. You know that's a reality, whether we like it or not. Yeah, you know, they have the players. You know, whether they can just put in on those performances. You know, देख लो ना, Spurs को ही देख लो. They went over there and they totally capitulated against Sporting. You know, even against the likes of Frankfurt. You know, 10 men से भी वो 2 गोल खा गए. नहीं लेकिन ड्रॉ ले था ना अंशुमन. डिफरेंस यहाँ पे कॉन्टे जो है ना, मतलब ही इतना मतलब वो ड्रिल करता है ना टीम को, especially in your first 2 seasons where he is in the second season. I believe वो इतना ड्रिल करेगा that they'll get you the point somehow. और वो दिख रहा था अगेन चेल्सी यार गेम. It was clear that Chelsea 100% deserved. I know वहाँ रेफरी हेल्प किया to Spurs, लेकिन Conte is that kind of a manager who gets you against Brighton last week में 1-0 हुआ. तो I feel that यस चैंपियंस लीग में स्पोर्टिंग के साथ बहुत बुरा था, लेकिन आप देखो फॉलोइंग वीक में फ्रैंकफर्ट अवे दे गॉट अ 0-0 ऑन द टेबल. नाउ दे आर टॉप ऑफ द टेबल चैंपियंस लीग में. तो आई बिलीव कॉन्टे आपका जो इटालियन मेंटालिटी होता है ना, ही गेट्स यू द रिजल्ट समहाउ. और इसलिए मैं बोल रहा हूँ विद दैट स्क्वाड प्लस कॉन्टे फैक्टर आई वुड लव टू से दे वुड बॉटल, लेकिन मुझे लग नहीं रहा. आई होप आई एम रॉन्ग. Argentina versus England final. I don't see that happening at all. Like at all. Unless or until Southgate, you know, turns into a prime Sir Alex or prime, you know, Arsene Wenger, and he get all the attacking, you know, fits everywhere. Because at this point of time, the mentality with which he is, you know, going for every game, by Nations League में कुत्ता बना दिया सारी टीम्स ने इंग्लैंड का. I think England are going to play France. जहां तक मेरा कैलकुलेशन करेक्ट है समय, अगर अज्यूमिंग कि फ्रांस माई टॉप एंड वो कर्स नहीं हो देयर ग्रुप, तो आई थिंक इंग्लैंड माइट एक्चुअली प्ले फ्रांस. तो इंटरेस्टिंग रहेगा. बट देखिए मतलब अगेन जो हम कॉन्टे की बात कर रहे थे, आई नो वी आर कंपेयरिंग साउथगेट एंड कॉन्टे यहाँ पे, जो होना नहीं चाहिए. लेकिन द रियलिटी इज दैट साउथगेट he has got somehow results in the recent past for England in terms of matches. लेकिन वर्ल्ड कप again I won't see that. Last time जो हुआ best case scenario with him reaching the final, I don't see him doing again. यार अभी बहुत ही ज्यादा बदतर है. प्लस he might be missing Reece James जो हम डिस्कस कर लिए ऑलरेडी. राइट बैक ऑन वैन बिसाका यार, बेन वाइट इंग्लैंड के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा वो. किरियन ट्रिपियर विल बी द फर्स्ट चॉइस ऑब्वियसली, लेकिन नहीं भैया वैन बिसाका कहां है. एग्जैक्टली तो किरियन ट्रिपियर तो जा रहा है. देखो काइल वॉकर बाहर है, रीस जेम्स बाहर है, एंड एक और बंदा बाहर है यार, किसको मिस कर रहा हूं मैं. ट्रेंट बाहर है. ट्रेंट तो उसके प्लान में ही नहीं है. ट्रेंट आएगा क्या? अब नाउ दैट रीस जेम्स इज आउट, ट्रेंट माइट गेट बैक इन. ओके फेयर इनफ. या सो वही है कि अभी समवन स्पेन इज समवन गेन वाला सीन है अभी, यू नो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो एक सेकंड, इंग्लैंड नीड्स अ मैनेजर चेंज टू परफॉर्म गुड. हाँ डैनियल यार बातें चल रही थी डैनियल अबाउट टुकल अगेन. व्हाइल ही इज अ वेरी गुड मैनेजर टुकल टैक्टिकली, अगेन आई थिंक इंग्लैंड को चाहिए थोड़ा सा और ओपन माइंडसेट वाला मैनेजर, सच में बोलता है. और वो भी टुकल, आई वुड लाइक टू सी हिम डू वीक इन वीक आउट वाला जॉब. दैट्स समथिंग दैट सूट्स हिम. तो लेट्स सी हु कम्स इन. मतलब अभी भी देयर इज अ लॉन्ग शॉट. एक्चुअली पॉटर एक फेवरेट होता है यार, अगर बाय चांस चेल्सी नहीं आता ना, पॉटर वुड हैव बीन 100% फेवरेट. लेकिन वो आ गया ब्राजील और नॉट भैया, इज गोइंग विदाउट सेइंग ही स्टार्ट्स
विनी को कैसे बेंच करोगे यार? क्या बोल के बेंच करोगे? 100%. Manav Vinicius Junior. is saying keep an eye on Mukoko. This guy is turning into a baller. He was, predicted. He was basically thought of that, but now finally he's showing that he got that class giveaway. अरे बहुत ही यंग यार अभी इमेजिन व्हाट लेवल ही कैन रीच एट यार मुकोको Yeah. आई थिंक अगेन इवन Matthias Tel of Bayern Munich यार मतलब these are two people that I feel that they might become great things. Again it's too early. I know दोनों ही बेसिकली वही 17-18 साल के जहाँ तक मुझे याद है लेकिन हाँ डेफिनेटली यार बहुत सारा पोटेंशियल प्रॉब्लम ये हो जाती है ना यंग फॉरवर्ड का डिसीजन मेकिंग ओवर द इयर्स दे डोंट आप उनको ज्यादा चेंज मत करो कीप इट नेचुरल इज व्हाट आई वुड सजेस्ट Exactly. भैया ये क्वेश्चन है संकेत का एक यंगस्टर पेड्री गावी कामाविंगा साका और फोरन अरे ये has missed the main one संकेत you have missed the main one come on मतलब बायर्न म्यूनिख की बातें कर रहे भाई मुसियाला एक्स चेल्सी मैन है मैं वही बोल रहा हूं इसमें से अगर मुसियाला को डालते इस लिस्ट में तो ही विंस ओवरऑल Yeah, maybe, but this list I would still go with Pedri या सच में बोलूं मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ देखिए साका इज ऑसम ऑन द आई बहुत अच्छा प्लेयर है एब्सोल्युटली लेकिन समवेयर डाउन द लाइन मुझे लगता है मतलब I don't know is it because he's playing for Arsenal we say that he's not in a top team फिर भी अच्छा करता है rather other way around क्यों नहीं सोचते I think Saka should do more for the team in my opinion. I know बहुत harsh है but I would say he should मतलब अगर आज के दिन में फिल फोर्डन आपके मैन सिटी में कर रहे हैं मेसन माउंट आपके चेल्सी में कर रहे हैं does Saka do enough to Arsenal than what Mason Mount and Foden do to their respective clubs? I actually would question that. मुझे लगता है अगेन बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो सकता है स्टेटमेंट लेकिन माय पर्सनल ओपिनियन है खाली भाई Saka is a bit overrated in my opinion. I think it's the English media as well which helps there लेकिन काफी अच्छा प्लेयर है I would not put him in the same bracket as a Pedri, bro. As in Pedri, first of all, different player altogether. He's a midfielder who can play as a winger. But Pedri is a baller. Pedri is an absolute baller. He'll be a generational player, मेरे लिए. Exactly. I understand that what's lacking with us, but what's lacking for Chelsea according to Celia is asking on Giveaway. What was lacking for Chelsea? Actually, mentality is the main issue, Celia. Like हमने बात किया under Tuchel a lot of times. Remember, yes, we won the Champions League. We are, as things stand, World Club champions as well. Let me say it. जब तक हमारे पास वो है trophy. लेकिन the reality is that we have lost 2 major cup finals in England. ठीक है. In fact, I would say 4 in the last 3 years. So it is not something that I'm really proud of. वो दिखाता है talking about youngsters again. That is something that we lack week in week out वाला फुटबॉल प्रीमियर लीग में हम क्यों हकते आ रहे हैं from the last 5 years. Yes, and that's the term I'm using क्योंकि I don't think हमारे पास वो mentality, that winning mentality एक है, never say die attitude है जो हुआ करती थी. Like Chelsea, I became a Chelsea fan because of the resilience that I always saw in Chelsea. हाँ, you still have it, लेकिन not as much as what it could be with this squad. Again, talking about squad, Chelsea का बहुत अच्छा squad on paper, but are we doing enough justice? Lot of times our players are not taking opportunities when it matters or hopefully we do लेकिन I think off the field issues वही है player power etc are coming into picture. Hopefully Potter आए तो यार वो थोड़ा सा semblance लाए to dressing room. Otherwise I think we are a very talented squad. Foden or Mount, there is just one winner for me. Sorry to say Chelsea fans, but Foden is miles ahead of Mount. Foden is miles ahead of Mount. Mount will never reach that level. Mount is a good player. He has some characteristics, but he's never reaching the level of Foden. चलो I'll take that from you then. और क्या ही तो बोल सकता हूँ मैं. Like दोनों ही बहुत great है. I must say that. Both are outstanding. Very different as well. Different as well, but the class that Foden oozes on the pitch. Finally he's getting into his own, which Pep wanted everyone to believe is finally showing that. So if I may, Manav I think probably knows my opinion यहाँ पे. Yes, Foden brilliant. I agree with Anshuman that skill wise I don't think आप compare भी कर सकते हो. Foden is one of those highly skillful players and effective भी आज के दिन में. लेकिन what I would only say is देखिए you cannot deny the fact जो Mount ने किया है Chelsea के लिए for the last 2 seasons. By he has been a Eden Hazard almost. मतलब he has taken Chelsea to top 4 by himself at times. Those were the games that Chelsea उसने किया. Has Foden done that with Man City? I would question that. But unfair है. But उस तरीके से totally फिर आप गेम प्ले पे जाओगे तो it's totally different. Foden को उतना करना ही नहीं पड़ता. Because then you have others to do that job.
वहां पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ इवन ना, माउंट क्रिएट भी करता है खुद, बेसिकली चैलेंज भी करता है, डिफेंड भी करता है, सब चीज करता है, बट एनीवे एज इन इट्स एन ओपिनियन, सो फेयर इनफ. Yeah, exactly. Good evening, Arunbhai. Welcome to the stream. Musiala German fan base? I don't think so. Absolutely don't think so. Sorry to say, Mogwai, but मुझे नहीं लगता. When you look at that, when you look at Musiala glide on the pitch, वो उसने दिखा दिया against Barca भी उसने दिखा दिया what he is capable of. And वो CL Bundesliga में भी, even though Bayern is not having a great season, he already have what 3 or 4 goals, 4 or 5 Yeah, assists, and something in like fact that. जो भी रिसेंट गेम में भी आई रिमेम्बर जो गोल्स हुए थे, एक दो बेसिकली मुसियाला के शॉट से रिबाउंड होके आया था. तो Yeah. अगेन वेयर याद रखिए, मुसियाला इज एक्चुअली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज इंग्लिश एज वेल. तो ही चोज जर्मन नेशनैलिटी. तो ये भी बोलना चाहूंगा. एंड अगेन ही लेफ्ट चेल्सी, तो मैं तो नहीं बोलना चाहूंगा उसके लिए, लेकिन द फैक्ट इज वो दिखाया यार. मुसियाला फॉर मी अलोंग विद पेड्री आर डेफिनेटली एट दैट लेवल. Exactly. Let me saying Petri over Musiala all day. That's your opinion, Obviously, we are not going to fight about it. You एग्जैक्टली like वो Petri, दोनों we ही like मतलब. Musiala. हाँ. Yeah, that's totally fine. Rishabh is saying Foden, first of all, Celia said resilience equals to Man United, obviously. You can, at this point Fergie of time, time, we need that. We need that. We need that more than anything else. So, Fergie time. and Oh my God! Talk about my opposition. I can never forget Fergie time, bro. As in more than United fans, exactly. मेरे ख्याल से. लेकिन ये चलो वो controversial है, लेकिन fact is यार, you have to give it to United over the years for that. Exactly. Celia, thanks a lot. And as I said, now that I have been streaming more regularly, Ankit Bhaiya will be here more regularly as well. Thanks for the super chat. And this comment, Daniel Bhai, I will take your comment, but this one, Foden is one of those English players who was never overhyped. And now that we can see that, Ankit Bhaiya, it totally agree. We can agree to that. हाँ, मतलब Obviously, उसका थोड़ा एटीट्यूड पे क्वेश्चन किया जाता था, yeah. बिकॉज आई थिंक ऑफ फील्ड इश्यूज याद है आपको. एक आई थिंक ऑन इंटरनेशनल ड्यूटी ही हैड सम कंट्रोवर्सी एज वेल. उसका तो ग्रीनवुड का साथ में तो हुआ था, दोनों को वापस हाँ, भेजा था. ग्रीनवुड के साथ में होता. आई थिंक दोज आर रीजंस व्हाई ऋषभ वो हुआ करता था, बिकॉज पीपल आर क्वेश्चनिंग मेंटालिटी ओवर से फॉर, हम कंपेयर ही कर रहे थे इसलिए बोल रहा हूँ. लेकिन मेसन माउंट हैज बीन दैट प्रो एग्जांपल, ठीक है, वर्सेस मे बी अ फोर्डन. तो मे बी दैट इज व्हाई इंग्लिश मीडिया वाज नॉट हाइपिंग हिम, बट व्हिच इज फेयर. ही डिजर्व्स द हाइप अभी के लिए. लेकिन वही है, मतलब टाइम विल टेल वेदर ही कैन बी योर मेन गाय इन द टीम और ही शुड बी अ लीडर. अभी के लिए लग रहा है दैट डेफिनेटली यार, विद हालैंड जो पार्टनरशिप किया ऑलरेडी, वाओ. This is one question. I know which player I will choose. Ankit Bhaiya, which player will you choose from United if you have to choose one? करंट प्लेयर पूछ रहे हैं ना अपन, डैनियल की ऑल हाँ, टाइम बोल रहे हो obviously. करंट. भाई करंट प्लेयर तो ऑपोजिशन प्लेयर, मैं मतलब आई नो जनवरी विंडो में तो मैं बोला था रोनाल्डो, लेकिन आज के दिन में ऑनेस्टली नहीं जाऊंगा. इट इज एन एक्स चेल्सी मैन, एंड दैट्स वही हम बांटते रहते हैं भाई बाकी लोग को. एंड वन ऑफ देम ऑब्वियसली इज केविन डी ब्रुयने. यस, मैन सिटी का प्लेयर है, व्हिच आई नो लॉट ऑफ मैचेस फैंस मे नॉट लाइक, बट द फैक्ट इज केविन डी ब्रुयने अगेन फॉर मी मोर देन फोर्डन. मैं बोलूंगा वर्ल्ड फुटबॉल में केविन, एंड इंग्लिश फुटबॉल में भी केविन डी अरे ब्रुयने आप हैज नॉट बीन. भैया जी हमारे यूनाइटेड और चेल्सी में if you have to Oh, choose okay, one United. Okay, okay. मुझे चेल्सी I से thought choose करना generally कौन से क्लब है. से. नहीं भाई नहीं. यूनाइटेड से आज के दिन में मैं किसको लेना चाहूंगा? कैसेमीरो ऑब्वियसली, बिकॉज कांटे का करियर इज काइंड ऑफ गोइंग द रॉन्ग डायरेक्शन. कैसेमीरो अभी भी है उसके पास लेग्स. आई थिंक आई वुड से इवन डेविड डेहा. यस, आई नो अंशुमन को पसंद नहीं है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, बट एक्चुअली आई लव अ शॉर्ट स्टॉपर, सो आई वुड गो विद डेविड डेहा और कैसेमीरो. मेरा तो एक ही है, रीस जेम्स. दे दो बस. हाँ, वो तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया यार, आउट ऑफ सिलेबस. कम ऑन. मैं उसका इंजर्ड भी ले लूंगा. वो 1 साल ना खेले, वो 1 साल पूरा फिट रहे, पूरा आराम करे. जहां उसको जाने का मन हो, जहां जाए, कुछ ना करे वो बंदा 1 साल, कोई दिक्कत नहीं है. वो अगले साल आए, अगले साल खेले. हमारे पास डलो और बैन मिसाका है. एक से अटैक नहीं होता, एक से डिफेंड नहीं होता. So नहीं वो तो obviously नहीं. मुझे तो वही था. अच्छा, तो guys, अंकित भैया शॉर्ट ऑन टाइम, so we will wrap it up. But yeah, अंकित भैया 3 गेम्स है before you go. 3 जो हमारे प्राइम गेम्स है इस वीक के, 4 ले लो. Obviously Chelsea versus Aston Villa, always fighty. Yeah. So ये 4 गेम्स है. We will get along first of all with, आपके मैं ओपिनियंस लूंगा. बार्सा वर्सेस मैड्रिड, ठीक है, यूनाइटेड न्यूकासल, लिवरपूल सिटी एंड एस्टन विला चेल्सी. 4 winners. स्कोर लाइन छोड़ दो, विनर्स. व्हाट डू यू थिंक? विनर्स, लूजर्स? हाँ, मैं थोड़ा लेफ्ट फील्ड जाता हूँ, एज पीपल हु माइट बी वाचिंग मी लॉट नो इट दैट यार विद एल क्लासिको. यस, मैं बोल रहा हूँ अगेंस्ट द टाइड, मैं बोल रहा हूँ बार्सिलोना विल विन दिस गेम.
Yet again, yes, back-to-back El Clasico victories they will get at the Santiago Bernabeu, which is not something that you would think. तो मैं बोल रहा हूँ it'll be like almost like a last minute winner or something like that. बहुत ही dramatic रहने वाला है. लेकिन वो आई एम गोइंग फॉर दूसरा कौन सा मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूकासल तो मैंने बता दिया ऑलरेडी. आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल गेट द बेटर ऑफ न्यूकासल. एक होता है सर्टेन टीम्स हैव एक होता है ना कि यार न्यूकासल है भाई दो डालेंगे इसको, मतलब दैट इज देयर विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एट होम. इट्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट. तो वो है रीजन. थर्ड वाला कौन सा ले रहे हैं अपन? चेल्सी एस्टन विला. चेल्सी. हाँ एस्टन विला चेल्सी. देखो मतलब हम कंसीड करेंगे इतना पक्की बात है बिकॉज Reece James might not play even though अभी तक 100% कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन I believe that एक सेकंड before we move to the Cucurella on the right, you already have Chilwell. What do you think? नहीं, I would not play Cucurella on the right. I know Barcelona tried that with Balde recently और वो वर्क भी किया था to an extent, लेकिन ये थोड़ा मतलब ये हो जाएगा like you have Azpilicueta in the club just for the sake of it. I think Azpilicueta, yes, he's not having the pace, लेकिन आज के दिन में भी I think Azpilicueta को अगर आप बोला जाए five at the back or three at the back or right center back खेले with crosses is actually better than Reece James on the day, जो बहुत लोग नहीं जानते. मतलब that's a fact. मैं वहाँ पर argument ही नहीं है. Reece James का एक issue है, he is not so good against the crossing ball while defending. Versus an Azpilicueta. तो वहां पर the experience of Azpilicueta counts. लेकिन I think I'll start with him unless वो दिख रहा है clearly को 90 मिनट नहीं खेल पा रहा. I would then see even a Ruben Loftus-Cheek, as much as I hate to say it, he might be the option. और I know Zakaria कुछ लोग बोल रहे थे वो तो जोक में ले रहे हैं बस, लेकिन हाँ I would still say हम कंसीड करेंगे यार. लेकिन do we have enough firepower up front आज के दिन में? Yes, Mason Mount might not play. फिर भी मैं बोल रहा हूँ Chelsea will score because as much as Sterling को भी ट्रोल किया जाता है, I believe Sterling has been one of the better signings in recent times as a forward. ठीक है, तो वो एक इन्वॉल्व हो रहा है गेम प्ले में मच मोर. यस, मिस करता है चांसेस. सो आई एम गेसिंग we'll get one goal from him. और ओबामेयांग भाई yet again come on हो जाए. Number 9 curse no longer there in Chelsea. और again big game Liverpool Man City Anfield में I know, and Man City are coming off a draw with a red card in midweek. I know क्वालिफाई कर दिए है चैंपियंस लीग के नेक्स्ट राउंड में, लेकिन मैन सिटी बीइंग पेप ही विल रिमेंबर दैट. लिवरपूल आर कमिंग ऑफ अ बिग विक्ट्री. तो यहाँ पर उल्टा देख रहा हूँ मैं, सिटी ढो डालेगी लिवरपूल को. मुझे यही लग रहा है, सच्चाई यही लग रहा है मुझे. अब देखते क्या होता है. भैया लिवरपूल एंड सिटी. हाँ वही मैं बोल दिया. मतलब लिवरपूल मतलब सिटी धो डालेगी लिवरपूल को इवन एट एनफील्ड. इट विल बी लाइक 3-1 स्कोर टू सिटी is what I'm मुझे भी लगेगा they might just score one goal here or there because home crowd है, but I won't be surprised if City even keeps a clean sheet. मुझे उस चीज का भी कोई सरप्राइज नहीं होगा. So भैया before you go, I know this is the last question for you. किसको लोगे, नेमार और एम्बाप्पे? यार विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट नेमार. यहाँ पर सोचने की बात ही नहीं है बिकॉज एम्बाप्पे यस ग्रेट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, लेकिन भाई पोटेंशियल दिया अचार लेने बिकॉज वी हैव सीन पोटेंशियल लॉट ऑफ प्लेयर्स अंटिल ही फिक्सेस दैट. नेमार arguably you can say that he has got a lot of unfair treatment over the years, so I would still go for Neymar. Not the best attitude but any day Neymar यार, वो experience भी रहता है तो. but हाँ we missed that boat. I think हमारे पास chance था when Galtier was about to get appointed कि we might have got Neymar, लेकिन अब it's too late. All right, so Ankit, thanks for joining. I know you are a bit short on time, so thanks for coming on this. मैंने बिल्कुल last time पे बताया था आपको, and thanks a lot you came. So it was El Clasico था, obviously wanted to talk about it. अच्छा लगता है when there is opinion from others as well. और मतलब सबसे मजा इस बात का है कि when our teams are not playing we can just basically sit back and enjoy. हाँ especially आप तो जानते हो यार, मैं I actually have I'm a nostalgic kind of a guy. तो मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड है when it comes to footballing history, trivia and all those things. तो वहाँ पर I think El Clasico always reminds you of those great games. Again मतलब the Ramos versus Puyol fights, Ronaldinho getting a standing ovation, the Figo story. तो काफी there is something about El Clasico हमेशा. Of course Messi Ronaldo तो भूल नहीं सकते. तो it always gives you some drama with Rudiger being there, with already Hazard or Courtois being there. I know Courtois was a snake, but I think I'm looking forward to that game. And of course, yeah, more importantly, hopefully Chelsea का I think injuries है, लेकिन फिर भी I'm hoping that it goes well, and of course all the best to United. All right, so before you go, we should go football trivia session. We should definitely do it.
We had plans, but I was traveling at that point of time, and whenever you wanted me out there, I was नहीं, we out. are planning, Celia. We off stage, we were Yeah. talking about it. We are planning like World Cup coming around. We will be World Cup, yeah, definitely yes. doing it. Anshuman will be on my channel. I'll be here. So we'll be, hopefully, we'll work Definitely. it out. कोई नहीं. All right, and guys, before Ankit Bhaiya leaves, as I always say, go out and click on that subscribe button and notification here. Notification on करना is very important, which I always say. Ankit Bhaiya, thanks a lot for joining in. अरे, my pleasure. चलो, all of you. See you guys, and of course, big up to Anshuman and United Road. Bye. All right, guys. So Ankit Bhaiya is gone for the time being. I will be here just for a few more minutes before I conclude the stream as well. So, few big games. Obviously, as a United fan, I want United to win. That goes without saying. Want Chelsea to lose. That goes without saying. But yeah, overall, always great to have Ankit Bhaiya out here, with such knowledge and with such poise, that calmness, where we can just talk football about, not trying to think about anything else at this point of time. So that always helps. So thanks a lot, guys, for joining in. And I don't know, it's been going for 1.5 hours. The Premier League has already started. The Leicester versus Crystal Palace game. So we will move on to that. And see you guys tomorrow for the watch along. I will just set up the stream for the time being. See you guys tomorrow. It will start at 5 p.m. The game is at 6:30. I just like to get started very, very shortly. So I will go for Cody Gakpo. That goes without saying. भाई 6-1 मुझे नहीं होता दिख रहा संकेत भाई, मुझे नहीं होता दिख रहा. To be very honest, मुझे नहीं होता दिख रहा. So we will see. Do I expect us to win against Newcastle? Definitely, I expect us to win against Newcastle. But yes, I have my, concerns. I have my concerns when it comes to their midfield. I have said that before. Thanks a lot, Sia. Definitely, we will see each other tomorrow for the build-up. Daniel bhai, thanks a lot. So guys, whoever joined in, thanks a lot. You can share, you can, ask your friends to join in as well. And see you guys tomorrow, 5 p.m. Stay safe, stay blessed, and have a great Saturday night. Good night, guys.